Hi guys, what's up? So, hi guys, welcome back. What's up? What's up? What's up? Hmm. Sorry guys, I am late. Uh, Still waiting for the class to go live. Hmm. I am sorry guys, I am late. I am really sorry. I am really sorry. Hmm. Uh, I am really sorry guys. Actually, अभी अभी मेरी बुक की डिलीवरी आई है सो आई वाज एक्साइटेड सो दैट्स व्हाई मैं मतलब 12 बज गए और पता भी नहीं चला था सो आई एम रियली सॉरी गाइस so I am Shiv Virmani, Indian medical student, and I am author as well of a book PharmacEasy. I have written a book PharmacEasy. तो PharmacEasy बुक मैंने स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद अनअकैडमी का ऑफर आया था सो दैट्स व्हाई this series is also called as PharmacEasy because PharmacEasy is the series जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फार्माकोलॉजी के हम इजीली कैसे पढ़ सकते हैं हम फिजियोलॉजी के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम मेडिसिनल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और दिस इज द बेसिकली बैकग्राउंड फिजियोलॉजी इज द बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन इज द foreground of the pharmacology so we study foreground and background and because of these two हमें better understanding होती है topics की right so we understand better so that's why this is called as Pharmac Easy. This series is called as Pharmac Easy. And welcome back guys, welcome to Unacademy. And you all know me, I know you guys all as well, right? So हमने इतने सारे सेशन साथ में करे हैं on this channel also. Let's crack NEET PG and on Unacademy app also. Right, so इतने सारे सेशन साथ में करे हैं तो I also know you, you also know me, and yeah, welcome to the Unacademy. It's a top online learning platform as well as online top teaching platform as well. So what are the benefits of the Unacademy? So basically, Unacademy is preferred because of the best quality of the content. Right, it provides you the best content, and guys, all the online learning platform as well as all the offline learning platform, they can provide you content, but they cannot provide you best strategy. सो आपको कंटेंट मिल गया बट यू डोंट नो कि आपको कब खत्म करना है क्या करना है यू आर नॉट हैविंग एनी डेडलाइन सो अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू दैट राइट सो अनअकैडमी आपको एक स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करती है एंड दीज टू थिंग्स आर प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ बेस्ट और द टॉप लेवल ऑफ एडुकेटर्स राइट टॉप लेवल ऑफ एडुकेटर्स इसको करते हैं बेसिकली प्रोवाइड करते हैं बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड गुड आफ्टरनून वेलकम वेलकम गाइस वेलकम एंड जैसे कि आपको पता ही है 12 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी बट आई एम लेट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एक्चुअली बुक की डिलीवरीज आ गई थी एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि अब मेरी बुक है कैसे देखो जब हम लिखते हैं तो डिफरेंट होती है और जब वो एक पेपर पर आती है तो डिफरेंट दिखती है सो दैट्स व्हाई आई वाज बिजी checking out that. So, anyways, let's start, guys. So these are the new mandatory slides. So last class में भी भूल गया था मैं एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं चल रही आजकल थोड़ी सी सो लास्ट क्लास में मैं ये डालना भूल गया था तो इस क्लास में है सो इफ यू वांट टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप सो यू कैन सर्च इट ऑन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना ना तो भी आप यू कैन get benefit from the Unacademy because there are many live sessions, many live special classes are going on, guys. So live classes का बहुत ही ज़्यादा benefit होता है even आपको कुछ पे भी नहीं करना उसके अंदर and you can ask your query right during the live chat and आपको वहीं का वहीं आपकी query solve हो जाएगी educator will answer you right so benefit बहुत ज़्यादा है so right and we are having many top level of educators right so Dr. Pawan, Dr. Zainab, so basically she teaches radiology and she's from AIMS, Dr. Preeti Rajesh sir and
many more guys, and we are having plus subscription and the iconic subscription. So guys, plus subscription के अंदर you get benefit of the live classes, live test quizzes, batch courses and structured schedule. So I was talking about this schedule. So this is the basically strategy, this is the benefit you get, right? So if you want to select plus, then you can use code VIRMANI. So this is the code and you can get 10% discount, right? And what I suggest you is iconic course. So Unacademy has collaborated with Prep Ladder. So इन दोनों के collaboration से एक best quality का generate हुआ है. So in this you get benefit of live classes, live test quizzes, batch courses, structure schedule, plus with the help of Prep Ladder, you get preloaded video lectures, question bank 2.0, rapid revision course, handwritten notes of the Prep Ladder. So this is the iconic course. Basically, if you want to subscribe the iconic course, then you can use this code. You can use the code VIRMANI only, and you can get 10% off. And if you are second year or third year medical student, then I suggest you this, right? Iconic course. एंड आपको जरूरी नहीं है कि 1 साल का लेना है, 2 साल का लेना है, 3 साल का लेना है. यू कैन चूज इट फॉर 12 months, 18 months, 24 months and 36 months. And referral code you have to use VIRMANI. And uh, you can also choose the plus subscription as well. So आपके पास दो choices हैं, plus and iconic. Yeah, special classes are good. So in this class we'll be doing the sum up session of central nervous system CNS. तो हमने बहुत टाइम पहले स्टार्ट करा था CNS, बट फिर हमारे कुछ लैगिंग हो गई बिकॉज आई वाज बिजी विद माय बुक. तो बुक की पब्लिशिंग करनी, बुक को पूरा कंप्लीट करना, सब कुछ चेक करना वाज डिफिकल्ट फॉर मी. और सच यहाँ पर मैं घर पे हूँ, सो कोई कलीग भी नहीं है जो मेरी बुक को मेरे बिहाफ पे चेक कर सकता है. दैट्स वाई सब कुछ मुझे खुद ही करना था, पब्लिशिंग, पब्लिशर तक पहुंचानी, फिर सब कुछ हैंडल करना, उसके बाद एवरीथिंग गाइस. सो यहाँ आई एम स्टार्टिंग, आई एम सॉरी. सो हमने CNS का स्टार्ट करा था एंटी एपिलेप्टिक से, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. देन वी हैव स्टार्टेड विद एंटी पार्किंसोनिज्म. फिर हमने एंटी पार्किंसोनिज्म के बाद एंटी साइकोटिक, एंटी मैनिक, एंटी डिप्रेसिव, एंटी एंजाइटी एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. दिस इज ऑन द ऐप. सो हमने, और आज हमने सेडेटिव हिप्नोटिक्स कंप्लीट कर लिया. सो वी हैव कंप्लीटेड द CNS completely, right? So in this session we'll be doing CNS का revision एक type से. And in the evening class, that is 5 p.m. So 5 p.m. वाली class पर we'll be doing MCQs, right? MCQs पर हम डिस्कस करेंगे MCQs इवनिंग वाली क्लास में, 5 p.m. वाली क्लास में. सो गेट रेडी फॉर दैट एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. So first of all, let's start with the anti-epileptic drugs. So first of all, seizures. So guys, seizures के basically दो types होते हैं, generalized and basically partial seizures. So generalized seizures, generalized tonic-clonic seizures. This is the major epilepsy, main most common epilepsy. It is also called as grand mal. And the partial seizures होते हैं, it is called as petit mal. So it is the commonest seizures, and it lasts from 1 to 2 minutes. The usual sequence is aura, cry, unconsciousness, tonic spasm in all the body muscles. And पहले there is increase in the tonicity of the muscles, then there is clonic jerking, followed by the prolonged sleep and depression of all the CNS functions. And then there is absent seizures, minor epilepsy, or it is also called as petit mal. Prevalent in children only, most common in children, lasts about half a minute. Momentary loss of consciousness. Patient apparently freezes and stares. इसके अंदर कोई भी टोनिसिटी, कोई भी टोनिक और क्लोनिक फेज नहीं आती. There is nothing like this. So absent seizures के अंदर there is a constant staring in only one direction, right? Yeah, PharmacEasy series. फार्मेक बुक जो है बहुत ही इजी टाइप की बुक है. एंड यू कैन ऑर्डर इट थ्रू नोशन प्रेस, बिकॉज अमेजोन पर अभी कुछ रेफरल कोड का इशू आ रहा है, नहीं हो रहा, बट टेक्नीशियंस लगे हुए हैं, सून हम उस पर भी डिस्काउंट दे सकते हैं. बट स्टार्टिंग में पता है 20 बुक्स 20 इंडिविजुअल्स के लिए अर्ली बर्ड ऑफर था फॉर द 44%, राइट? सो इतना ज़्यादा रश बढ़ गया अमेजोन पर कि वहाँ पर कुछ पता नहीं क्रैश हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज हो गए. तो अभी
रिसेंटली अमेज़न पर आप कूपन कोड वैलिड नहीं कर सकते, सो अगर आपको ऑर्डर करनी है देन नोशन प्रेस पर जा सकते हो एंड यू कैन यूज़ ईज़ी44। ईज़ी44 इज़ द कोड और आपको 44% ऑफ ही मिलेगा एक्सक्लूसिवली फॉर द अनअकैडमी। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ही है, राइट? एंड so generalized tonic-clonic seizures are the major epilepsy grand mal. So they are commonest seizures, right? So they last from 1 to 2 minutes, right? So basically सबसे पहले क्या होता है, there is tonic spasm of all the muscles and there is clonic jerking and followed by prolonged sleep depression of all the CNS functions. So first of all क्या होता है, tonicity, there is rigidity in the muscles. After that there is jerking, right? And after that there is loss of CNS functions and which is also called as Todd's paresis. Todd's paresis is the post seizure effect. Todd's paresis के अंदर patient does not know what is मतलब उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ. So Todd's paresis is a condition जो कि post seizure दिखती है कई बार patients के अंदर. And absent seizures are the minor epilepsy. They are common in the children. तो चिल्ड्रन के अंदर कोई भी रिजिडिटी, कोई भी क्लोनिक फेज नहीं आती. तो ये सीजर एक इस टाइप का सीजर है कि जो पेशेंट है, जो चाइल्ड है, वो इट स्टेयर्स ही विल स्टेयर इन ओनली वन डायरेक्शन ओनली, राइट? सो एक ही जगह पर वो देखता जाएगा, राइट? एंड नो मस्कुलर component और नो jerking is seen. EEG changes होते हैं, right? So there is a 3 cycle per second spike and wave pattern is seen. Atonic seizures के अंदर akinetic epilepsy, unconsciousness with relaxation of all the muscles due to excessive inhibitory discharges. Patient may fall as well. And myoclonic seizures के अंदर shock like momentary contraction of muscles of the limb or the whole body. तो गाइस इसके अंदर ना हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ही स्लो कवर कर चुके हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को, राइट? सो इसके अंदर हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे. Infantile spasms, they are seen in the patient, probably not a form of epilepsy. Intermittent muscle spasm is seen. Progressive mental deterioration is seen. Diffuse changes in the inter-seizure EEG are noted. राइट? सो दिस इज अ टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर. अभी हम अच्छे से इसको समझेंगे, आगे मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे. सो पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स. So they are basically two types, simple and complex. So partial seizures, they are of two types, simple and complex. और जो इसका थर्ड टाइप है, that is a secondary type. So basically क्या होता है, सिंगल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल, they can induce generalized tonic-clonic seizures. So partial seizures can also cause generalized tonic-clonic seizures. So this is the secondary change, right? So पहले तो क्या होता है, partial seizure आता है, it occurs first and then it evolves into the generalized tonic-clonic seizures with the loss of consciousness. तो yes ECG की क्लास होगी, बट पहले हमें हार्ट स्टार्ट करना है. हार्ट स्टार्ट करेंगे, हार्ट कवर करेंगे एंड in between heart we'll be doing ECG, right? Simple partial seizure SPS cortical focal epilepsy lasts, so it also lasts about 30 to 60 seconds, right? Often secondary. Convulsions are confined depending on the area of the cortex involved in the seizures without loss of consciousness. Complex partial seizures जो होते हैं, that is basically they are attacks of the bizarre and confused behavior and purposeless movements. Emotional changes are also seen. They last about 1 to 2 minutes along with the impairment of the consciousness. An aura often precedes the seizure. Focus is located in the temporal lobe. Simple partial और complex partial, ये दोनों. So basically क्या होता है? So there are two lobes of the brain, right and left. So ये क्या, जो partial seizures होते हैं वो फोकल सीजर्स होते हैं. बेसिकली वो एक टाइप फोकस से स्टार्ट होते हैं एंड एक ही लोब में अपना इफेक्ट दिखाते हैं. बट जब ये फोकल बढ़ जाता है, जब ये फोकस बढ़ जाता है, देन उनका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और जनरलाइज्ड इफेक्ट आता है. एंड जनरलाइज्ड इफेक्ट की वजह से ही दे कैन कॉज सेकेंडरी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, राइट? एंड लेट्स मूव फर्दर. सो गाइज अब थोड़ा अच्छे से बात करते हैं. एबनॉर्मल फोकस होता है ब्रेन के अंदर, कोई भी एबनॉर्मल फोकस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, न्यूरोसिस्टर का हो सकता है, और एनीथिंग एबनॉर्मल. सो
there is anything abnormal tissue present in the brain, so it can lead to the abnormal electrical discharges, and thus this abnormal electrical discharges can cause seizures. तो guys इनिशियली क्या होता है जब abnormal discharges होते हैं तो ब्रेन उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोबारा से कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, बट जब ये डिस्चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता एंड दैट्स व्हाई सीजर कैन अकर, राइट। कन्वर्जन्स की अगर हम बात करें तो मोटर मैनिफेस्टेशन ऑफ द एबनॉर्मल डिस्चार्जेस आर कॉल्ड एज कन्वर्जन्स। सो गाइस सीजर क्या होता है, सीजर इज द एबनॉर्मल डिस्चार्जेस ओनली, एंड अगर उसका मोटर मैनिफेस्टेशन आई, राइट, अगर हमें बाहर से कुछ दिखा, कोई मसल रिजिडिटी हुई, क्लोनिक फेज आया, जर्किंग फेज आया, सो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन। एंड गाइस एपिलेप्सी, सो ये तीनों चीज में आपको डिफरेंस जाना बहुत जरूरी है, सीजर्स, कन्वर्जन्स एंड एपिलेप्सी। Seizure is the abnormal discharge in the brain. Convulsion is the motor manifestation of the abnormal discharges, and epilepsy is the any underlying chronic cause that can cause more than two unprovoked seizures. Right. So seizure is the abnormal discharge, abnormal electrical discharge. Convulsion is the motor manifestation of the abnormal discharge. Epilepsy is when there is chronic disorder inside the brain or any other thing. तो उसकी वजह से if there are seizures, if there are two or more seizers, right, unprovoked, बाहर से provoke नहीं करे हुए, राइट, हमने बाहर से कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया जिसकी वजह से सीजर हो, अनप्रोवोक्ड सीजर्स, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपिलेप्सी। राइट, राइट, I hope it's clear. And let's move further. So generalized tonic-clonic, we have already talked about what is this. So generalized tonic-clonic seizures के clinical symptoms जो आते हैं, first of all there is tonic phase, then there is clonic phase. Tonic phase means the rigidity, and then clonic phase means that there is a jerking, constant jerking, right? And tonic phase के अंदर tone of the muscle are increased, and there are sudden contraction of the muscles of expiration as well, right? टोन बढ़ जाती है, रिजिडिटी हो जाती है, राइट, प्लस देयर इज सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन एज वेल, एंड रेस्पिरेटरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वोकल कॉर्ड्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, दैट्स व्हाई इट कैन लीड टू इक्टाल क्राई, राइट, देयर वुड बी कांस्टेंट इक्टाल क्राई, राइट। आई होप इट्स क्लियर। ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी, आपकी सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी की बुक में, राइट। सो टोनिक phase is the phase जिसके अंदर muscles are, tone of the muscle is increased, they become rigid, there is sudden contraction of the muscles of expiration as well, plus vocal cords भी contract होंगी, and vocal cord, oh my god, vocal cords के contraction की वजह से there is ictal cry, right, there is uprolling of the eye, pooling of the secretions, tongue bite as well, tongue bite की वजह से there can be bleeding as well, right. There is perioral cyanosis, HR is increased, BP is also increased, and mydriasis is also seen. So guys, there is first of all, आपको पता कैसे चलेगा कि this patient is having seizure? So first of all, you have to see the uprolling of the eye, cooling of the secretions. There can be tongue bite, right? There can be tongue bite, but general cases में होती है, right? There can be tongue bite, perioral cyanosis, HR, BP is also increased, mydriasis is also seen. So there can be these things. So guys, अगर आपको कोई भी patient दिखा, right? So if he or she is having these symptoms, then आपको पता चल जाएगा कि he is having seizures, right? But guys, आप मुझे अब एक बार ये बताओ कि अगर एक पेशेंट को generalized tonic clonic seizure हो रहा है and he is in the center of the road, सेंटर ऑफ द रोड पर उसको जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर हो रहा है, देन उसको क्या कर, देन आपको एज द वो क्या होता है इंडिविजुअल, कौन सा इंडिविजुअल, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप एक GTCS के पेशेंट को देख रहे हो, अगर आपको कॉन्स्टेंटली जर्किंग दिख रही है उस पेशेंट के अंदर, देन आपका और वो सेंटर ऑफ द रोड में है तो आप क्या करोगे? अगर आप मुझे ये कहोगे कि आप उसको लेकर कॉर्नर पे ले आओगे रोड के सेंटर से,
तो आप फेल हो, आप नहीं कर सकते। वो पेशेंट कॉन्स्टेंटली रिजिड होगा, राइट, कॉन्स्टेंटली जर्किंग में होगा, जर्किंग मूवमेंट होगी, आप उस पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते। आइदर वो खुद को इंजर्ड कर लेगा बिकॉज अननोइंगली हो रहा है, ही डजंट नो कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो स्टॉप नहीं कर पा रहा अपनी मूवमेंट्स को, या तो वो खुद इंजर्ड हो जाएगा या वो आपको इंजर्ड कर देगा, राइट, या वो खुद इंजर्ड हो जाएगा या वो आपको इंजर्ड कर देगा, राइट। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो आप क्या करोगे, आप उस रोड को कोशिश करोगे कि क्लियर करवा सको उस एरिया को, आपको पेशेंट को नहीं टच करना जब तक उसकी जर्किंग मूवमेंट खत्म नहीं हो जाती, राइट। जब तक जर्किंग मूवमेंट खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको पेशेंट को टच नहीं करना, बिकॉज वो जर्किंग की वजह से उसको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, उसको डैमेज हो सकता है, प्लस आपको भी डैमेज हो सकता है, right. So what you have to do is you have to clear the road first, right. आपको वहां खड़े होकर जो कार्स आ रही हैं उनसे उसको बचाना है, राइट। और उसके बाद साथ में ही आपको इमरजेंसी जो भी बुलानी है, एम्बुलेंस को कॉल करना है, ताकि जब तक उसका जर्किंग खत्म हो तब तक एम्बुलेंस आ जाए एंड उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल सके, राइट, immediate treatment मिल सके। And guys, clonus is the violent jerking of all the limbs followed by the post-ictal deficit. So guys, post-ictal deficit is nothing but the Todd's paresis. Todd's paresis is post-ictal deficit only because basically क्या होता है, जब भी वो क्लोनस की स्टेट से निकलता है तो पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ। He feels like the basically उसको he is not oriented to surrounding, right, so उसको कुछ पता नहीं चलता कि what is going wrong with him, तो that is Todd's paresis, right. and ये generally दिखता है पोस्ट सीजर इफेक्ट, पोस्ट सीजर अटैक के बाद, right. Post-ictal deficit is confusion plus orientation deficit plus patient is unconscious. So these things I have already told you that Todd's paresis or post-ictal deficit के अंदर the patient will be confused, orientation would be deficit and patient would be unconscious, right? And most of the cases of epilepsy are primary, idiopathic. Some may be secondary, right, to the trauma, surgery, intracranial tumor, tuberculoma, sister Kai, cerebral ischemia, right. So most of the cases of the epilepsy are primary, idiopathic. मतलब कि जिसका cause you don't know the cause, right. There is abnormal discharges, right. There are abnormal discharges, but you don't know how are these charges are produced, right. And generally secondary causes भी होते हैं, right. That can be given in the KDT. Yeah, Todd's paresis is not given in the KDT. Todd's paresis is given in the Harrison. Todd's paresis is given in the Harrison 20th edition, right? So if you want to learn more about Todd's paresis, तो आप Harrison पढ़ सकते हो। Harrison के अंदर सीजर्स वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। So Harrison के अंदर आप सीजर्स वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। PDF जनरली डाउनलोड कर लो। You can get 19th एडिशन वाली PDF easily, 20th एडिशन वाली शायद डिफिकल्टी होगी आपको मिलने में, राइट। आई एम आल्सो हैविंग PDF ऑफ हैरिसन। KTT में तो ये कुछ है ही नहीं, राइट। हैरिसन से उठा, हैरिसन में है टॉड्स पैरेसिस बेसिकली। सो इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट टॉड्स पैरेसिस देन यू कैन रीड हैरिसन। हैरिसन में भी सीजर्स वाला पार्ट ही पढ़ लो, राइट। सीजर्स वाला पार्ट पढ़ लो, पूरी हैरिसन पढ़ने की जरूरत नहीं है। Treatment is symptomatic. Symptomatic treatment is only there. Right. Basically, seizures को हमें seizure threshold को बढ़ाना है. So that is the symptomatic treatment only. Seizure threshold को अगर हमने बढ़ा दिया तो seizures इतनी जल्दी smaller stimuli पर नहीं cause करेंगे, right? Smaller stimuli पर seizures नहीं होंगे, right? I hope it's clear. And uh, हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे सकते हैं। बेसिकली देखो, सिस्टर का अगर ब्रेन में हो चुका है देन इट इज परमानेंट, राइट। कैल्सिफिकेशन हो जाती है परमानेंट। मैंने लास्ट है ना, या 20th एडिशन अवेलेबल है, देन यू कैन रीड इट फ्रॉम 20th एडिशन ऑफ हैरिसन। सो गाइज,
सिस्टर का ट्यूबरकुलोमा, दे आर बेसिकली परमानेंट डैमेज, राइट। एक बार वो हुआ, कैल्सिफिकेशन हो गई, उसके बाद वी कैन रिमूव द कैल्सिफिकेशन, बट जो डैमेज हो चुका है वी कैन नॉट री रिवर्स दैट, वी कैन नॉट रिवर्स द डैमेज इन द ब्रेन बेसिकली, बिकॉज ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है दैट इज परमानेंट, दैट कैन नॉट बी रीग्रोन। जैसे स्किन है, स्किन रीग्रो हो सकती है, राइट, डेवलप दोबारा से हो सकती है, बट ब्रेन टिश्यू के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। नर्व फाइबर्स एक बार डैमेज हो गए तो दोबारा नहीं रीग्रो हो सकते, दोबारा नहीं रीजनरेट हो सकते। दैट्स व्हाई अगर ट्यूमर, ट्यूबरकुलोमा, सिस्टर का ब्रेन के अंदर एक बार हो गए, देन हम ड्रग स्टार्ट कर सकते हैं, हम उस सिस्टर काय को किल कर सकते हैं, हम ट्यूबरकुलोमा को ट्रीट कर सकते हैं, हम सर्जरी कर सकते हैं ताकि हम जो कैल्सिफिकेशन है वो निकाल सकें। बट गाइस अल्टीमेटली जो डैमेज हो चुका है वो डैमेज रिवर्स नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई वी कैन ओनली गिव द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिससे कि जो सीजर का थ्रेशोल्ड है दैट कैन इंक्रीज, राइट। सीजर का थ्रेशोल्ड अगर हमने बढ़ा दिया तो स्टिमुलाई आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। सो स्टिमुलस, बहुत ही ज्यादा स्टिमुलस चाहिए होंगे अगर आपको सीजर्स करने हैं, राइट। अगर अगर आपकी बॉडी को सीजर्स करने हैं तो बहुत ही ज्यादा स्टिमुलस चाहिए होंगे। सो इट फील सेम लाइक कि आपने गेट पर आ, जैसे कि आपने गेट पर लॉक लगा दिया, राइट, लेकिन आप इसको कॉन्स्टेंटली धक्का दे रहे हो कि नहीं ओपन हो रहा, राइट। सो गेट गेट इज सीजर, राइट। सो हम हमारी जो ड्रग्स ऐड करेंगी वो गेट पर लॉक लगा देंगी, राइट। आप इसको खुद ये जो स्टिमुलस है वो हो आप, राइट, इमेजिन कर लो। आपने इसको धक्का मार रहे हो, पुश कर रहे हो, नहीं ओपन हो रहा। आपने अपने फ्रेंड को बुलाया, वो भी पुश कर रहा है, नहीं ओपन हो रहा। आपने एक और फ्रेंड को बुलाया, फिर उसने एक फ्रेंड को बुलाया, उसने एक और फ्रेंड को बुलाया, उसने एक और फ्रेंड को बुलाया, एक और फ्रेंड को बुलाया, एक और फ्रेंड को बुलाया। ऐसे ही जैसे पहले अगर आप अकेले इस गेट को खोल सकते थे, पहले एक ही स्टिमुलस कैन कॉज सीजर अटैक, अब हमने जो ड्रग दी उसकी वजह से हमने लॉक लगा दिया, सीजर थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, तो अब सिर्फ अब इट नीड्स 10 individuals to generate the seizure attack, right? So by this phenomena we can increase the seizure threshold, and now it will be needing more stimuli to cause or to generate the seizure, right? हमें बहुत ही ज्यादा स्टिमुलस चाहिए होगा ताकि हम इस गेट को खोल सकें, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ एपिलेप्सी आर प्राइमरी इडियोपैथिक, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ये चीज परमानेंट हो जाती है एज सच, ये रिवर्स नहीं हो सकती। सो अगर आप इसको सर्जिकली भी रिमूव कर लेते हो, बट स्टिल इट इज इरिवर्सिबल चेंजेस जो ब्रेन में हो जाते हैं, राइट। सो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीट कर सकते हैं, हम बेस को ट्रीट नहीं कर सकते, हम कॉज को ठीक नहीं कर सकते, हम इटियोलॉजी को ठीक नहीं कर सकते। वी कैन इंक्रीज द सीजर थ्रेशोल्ड ओनली, राइट। एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स देखो, अब क्या हुआ था कि हम पेशेंट्स पर एज सच टेस्टिंग नहीं कर सकते, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस, राइट। सो अब हमने देखा कि हम जो ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं वो हम टेस्ट किस पर करेंगे। तो देन आफ्टर दैट हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल्स मॉडल जनरेट करे, राइट, एक्सपेरिमेंटल्स मॉडल जनरेट करे जिसकी वजह से हम इंड्यूस करते हैं सीजर अटैक्स को, और फिर हम मेडिकेशन देते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि इज द ड्रग इज एफिकेशियस और नॉट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज, सो हमने कुछ चार टाइप के बनाए: मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर्स, पेन पीटीजेड सीजर्स, chronic focal seizures, basically it is application of alumina cream, then kindle seizures. These are the three types of seizures जो कि experimental है, right? One cannot, basically हमें टेस्टिंग करनी है उसकी, है ना, हमने टेस्टिंग करनी है इसकी, हमने इसकी टेस्टिंग करनी है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? We want to test the drugs that are they efficacious or not, right? I hope it is clear. Wait a second guys, I think there is some error guys. देखो पहले भी हमारी ना पॉज हो गई थी वीडियो सेंटर में ही, पता नहीं what's wrong with the YouTube, what's wrong with the live stream. Let me see guys, I think it's again
पॉज हो चुकी है, मेरे पास नहीं आ रही। एक सेकेंड गाइस, लेट्स सी व्हाई पॉज कैसे हो चुकी है यार। आई थिंक नाउ इट्स फाइन। wait a second, guys. Let me just see what's the error, man. Uh, what is the error? Uh, I think now it's fine. I think now it's fine. Let me just see. Uh, fine, guys, it's working. हाँ, अब आपकी चैट्स तो दिख रही है मुझे। इट्स वर्किंग फाइन, नॉट पॉज, डू स्पीड टेस्ट एंड चेक नेट स्पीड। या नेट स्पीड तो बहुत अच्छी आ रही है। इट्स वही कर रहा था मैं। इट्स अराउंड 130 Mbps uploading and downloading. So it's fine. I think now it's good. Yeah, वीडियो पॉज नहीं हुई है, वीडियो चल रही है। Yeah, and now I think it's fine. Now I think it's fine. Let's discuss them this further. हाँ, तो गाइस, मैक्सिमम इलेक्ट्रोशॉक सीजर जो होते हैं, दे आर बेसिकली ब्रीफ हाई इंटेंसिटी शॉक जो कि अप्लाई होते हैं हेड ऑफ द रोडेंट। सो हम क्या करते हैं, रोडेंट के हेड पर इन हाई इंटेंसिटी शॉक देते हैं। सो इट प्रोड्यूसेस अ टोनिक फ्लेक्शन एंड देन टोनिक एक्सटेंशन एंड देन इट प्रोड्यूसेस अ क्लोनिक कन्वर्जन। सो बेसिकली it is producing same as G generalized tonic clonic seizures. First of all, it's having tonic phase, then it's having the clonic phase. I hope it's clear, right? So this is the maximal electroshock seizures, तो हम इसको इंड्यूस करते हैं एंड the tonic phase is selectively abolished by the drugs effective in the GTCS. So जैसे मैंने आपको बताया कि maximum electroshock seizures जो है, वो क्या करते हैं, वो high intensity shock is applied to the head of the rodent, right, and it produces a tonic and the clonic phases. Tonic phase जो होती है, tonic phase is selectively abolished by the drugs, right, effective in the GTCS. Activity in this model represents action on the spread of the seizure discharge. Right? So guys, हमने फिर drug दी, so guys, it is just a mimicry of the GTCS. तो जिस पेशेंट के अंदर GTCS है, हमने as such GTCS इंड्यूस कर दिया रोडेंट के अंदर, then we'll be giving the drugs to the rodent, and जो ड्रग इस चीज को ओवरकम कर सकती है, so that would be effective in GTCS as well. I hope it's clear. I hope it's fine. I hope it's good. Second guy, pentyl. Pentylene trazole. Basically, pentylene tetrazole is the drug. PTZ. Basically, it's the substance. इसका हम injection देते हैं. Injection of the PTZ in the rats or mice. So it produces a clonic conversion, which are prevented by the drugs that are effective in myoclonic and absent seizures. Activity in this model represents action on the seizure focus itself. तो गाइस, PTZ जो चीज है ना, PTZ, it is a substance that produces a clonic phase, right? So jerking phase produce होगी rats के अंदर, mice के अंदर. So जो clonic conversions हैं, जैसे कि myoclonic basically. So फिर हमने drug दी, so that drug would be effective in the myoclonic seizures, right? जो कि इस seizures को, इस PTZ induced seizures को overcome कर सकती है. That would be preferred, right? And chronic focal seizure produced by the application of alumina cream on the motor cortex of the monkey. So guys,
chronic focal seizures. So guys, uh, as I have already told you that there are right and left lobes, two lobes. So जहां पर भी एक focus generate हो गया, वहां से seizures, partial seizures generate होंगे. First of all, there can be simple and the complex partial seizures. But guys, अगर if we apply the alumina cream on the motor cortex of the monkey, right. So basically, focal seizure are produced by the application of the alumina cream on the motor cortex of the monkey. So it resembles the partial seizures, right? So जो भी drug इसको subside कर सकती है, that will be subsiding the partial seizure as well, right? And Kindle seizures, if we talk about the Kindle seizures, then brief bursts of the weak electrical impulses are applied to the brain, especially amygdala, intermittently over the days. After discharge is increased progressively, tonic-clonic seizures are produced after 10 to 15 shocks. With time, spontaneous seizures set in usually after 100, more than 100 shocks. This indicates that seizure have a self-perpetuating and reinforcing effect. More neuronal circuits are facilitated, recreated in the seizure process. Kindling is the probably involved in genesis of the clinical epilepsy. तो guys, उसके बाद क्या हुआ, हमने चेक करा. So basically what is happening, why there is a seizure. So guys, क्या होता है, wait a second, what's wrong with this man, how to end this, zoom in. Yeah, now it's now flu खराब कर देता है यार. Why PPT is like this, फ्लो खराब हो जाता है. So guys, जब हमने चेक करा कि why there is a seizure, so guys जब चेक करा then क्या हमारे सामने आया कि जब भी कोई भी electrical discharges are there, when there are electrical discharges, so what is happening here is there are increased neuronal circuits are formed. So guys, earlier अगर एक न्यूरोनल सर्किट था, राइट, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को यहाँ से ट्रेवल होने में लगभग मान लो बहुत टाइम लगता था, राइट, मान लो 10 सेकेंड्स लगते थे. बहुत नैनो सेकेंड्स में काम हो जाता है, बट लेट अस इमेजिन दैट 10 सेकेंड्स लगते थे. बट जब सीजर है तो मतलब रैपिड ट्रांसफर हो रहा है. Rapid transfer is there, right? Rapid transfer is there. So what is happening here? Neuronal circuit के अंदर there are many neuronal circuit are formed new, right? So पहले अगर एक था 10 seconds लगते थे, अब यहाँ 10 generate हो गए नए. तो इन 10 की वजह से ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एंड विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, जो पहले 10 सेकेंड लगते थे अब वो 1 सेकेंड के अंदर काम हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई सीजर इज प्रोड्यूस्ड. दैट्स व्हाई rapid transfer of the new impulses are generated, and because of this rapid generation this is produced. Yeah, there I am having 3 lectures in a day. Yes, it's easy and iPad with no lag, and easy to use. Search a stream using iPad if you have Elgato using OBS software in PC. So I cannot understand what are you saying. Basically हम iPad पे ले सकते हैं क्या? If we can take it on iPad, then it would be really beneficial, guys. iPad पर क्लास लेने में मजा अलग ही आएगा. So there is a software called as Elgato. You are saying this only, na? Elgato is the software. It resembles like OBS software only, right? I think you are saying this thing only. Thank you, Prajwal. Yeah, I am having 3 lectures in a day. So यार बहुत ज़्यादा ना लैग हो चुके हैं हम. हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी थी पहले, बट लैग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ माय बुक. क्या करें. सो लेट्स मूव फर्दर. सो गाइस, किंडल सीजर की मैंने बात कर ली कि पहले देयर वाज वन न्यूरोनल सर्किट, एंड इमेजिन करा हमने 10 सेकेंड्स लगते हैं उसको ट्रांसफर होने में, राइट. एंड yeah, Elgato, na? Yeah, I'll try this software, and we'll take the next session on Elgato. Let's see what happens. I hope सही होगा.
सो गाइज अब क्या हुआ था कि एक न्यूरोनल सर्किट की जगह जिस पेशेंट के अंदर सीजर्स हो रहा था, तो हमने देखा कि देयर आर मेनी न्यूरोनल सर्किट्स जनरेटेड. अर्लियर देयर वाज वन, बट नाउ देयर आर 10 न्यू सर्किट्स. तो पहले 10 सेकेंड्स लगते थे ट्रांसफर में, नाउ ओनली 1 सेकेंड लगता है. सो रैपिड ट्रांसफर हो रहा है. दैट्स वाई एक एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर हो रहा है. दैट्स वाई बहुत ही ज्यादा रैपिड इंपल्स ट्रांसफर हो रहा है. दैट्स वाई सीजर प्रोड्यूस होगा. सो गाइज हमने बात कर ली फोकल सीजर्स की, पार्शियल सीजर की, जनरलाइज सीजर्स की. तो गाइज फोकल सीजर्स के अंदर एक ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज इंक्लूडेड. आई एम सॉरी, मैंने पहले लोब्स बोल दिया था. लोब्स तो गाइज फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल 4 लोब्स हैं. आई एम रियली सॉरी, हेमिस्फीयर बोल रहा था मैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात कर रहा था मैं. Right, so there are two hemisphere of the brain, right and left. Lobes are four. Right, so lobes की अगर मैं बात करूं, so we are having four lobes: frontal, temporal, parietal, and occipital. So these are the four lobes, and I'm really sorry, पता नहीं, actually I'm not well, guys. That's why nausea और vomiting वाले side effects आ रहे हैं. तो अभी थोड़ा ऐसा चल रहा है. Please bear me. So simple partial, complex partial, and it can cause secondarily generalized seizure as well. So तो focal seizures बाद में generalized seizures cause कर सकते हैं if the focus is increased, chronic, prolong हो चुका है. So that's why focal seizure can get transformed into the generalized seizures involving both cerebral hemisphere, absence, petit mal, generalized grand mal, clonic, tonic, atonic, myoclonic seizures. So these सब types हैं. And we have already talked about the experimental electroshock models. Now the most important thing is classification of the drugs. So guys, in this we want to decrease or we want to depress the CNS, right? तो हमें जो भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन्हें डिक्रीज करना है, राइट, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको इंक्रीज करना है. सो दैट्स व्हाई वी विल बी इंक्रीजिंग द गाबा बिकॉज दिस इज द इनहिबिटरी transmitter, and glutamate is excitatory, so that's why glutamate को हम decrease करेंगे. And we can also block the calcium channels. But guys यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि CVS के अंदर हम पढ़ेंगे कि we will be blocking the L type calcium channels, right? So there are two types of calcium channels, L type and T type. L type calcium channels जो हैं that is basically present on the CVS और heart पर होते हैं, and T type is in CNS, right? Right. I hope it's clear. Uh, right, it's clear. So if we want to increase the GABA, then we have to give barbiturates, benzodiazepines, valproate, vigabatrin, gabapentin, and tiagabin. अभी आप इसको please थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मत लेना. we'll be seeing कि इन ड्रग्स का काम कैसे कैसे होता है. तो अभी आगे अगले 15 मिनट्स में आपको ये सब ड्रग्स याद हो जाएंगी, राइट? और हम ग्लूटामेट को कम करेंगे बिकॉज ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर. तो द ड्रग्स that we are having is that can decrease the glutamate is barbiturates, phenobarbital, phenytoin, lamotrigine, topiramate, valproate, lacosamide and levetiracetam. And T types calcium channels की अगर हम बात करें तो if you want to block the T types calcium channel then we'll be using ethosuximide and valproate. So guys in this valproate is the drug जो कि हर एक चैनल से एक्ट करती है. वैल्प्रोएट इज द ड्रग जो कि हर एक चैनल से हर एक मैकेनिज्म से एक्ट करती है, राइट, बट इंस्टेड ऑफ के प्लस ओपनिंग, राइट. के प्लस ओपनिंग इज द न्यूअर मैकेनिज्म, राइट. आई थिंक केडीटी में भी ये अवेलेबल नहीं है शायद से. So if we want to increase the GABA, then we will be giving these drugs. If we want to decrease the glutamate, then we are having these drugs. If we want to block the calcium channels, then we can use ethosuximide and valproate. Ethosuximide is the drug of choice for absence seizures, right? And we can also block the sodium channels. Phenytoin is the carbamazepine, valproate, lamotrigine, topiramate, and lacosamide are the drugs. सो गाइज यू हैव टू लर्न दीज ड्रग्स. यहीं पर एज सच आपको ये याद करनी पड़ेगी, बट आगे मैं इसको इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, राइट. के प्लस चैनल ओपनिंग, दीज आर द न्यूअर ड्रग्स, न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, राइट. सो द ड्रग वी आर हैविंग इज रेटिकापिन एंड टोपिरामेट. रेटिकापिन, सो गाइज यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुन लो कि गाइज यहाँ पर गाबा जो इंक्रीज करी थी, तो वी आर हैविंग द ड्रग्स गाबा, विगाबेट्रिन, गाबापेंटिन एंड टियागापिन. So guys, in these three drugs हमें गाबा देखने को मिल रहा है. विगाबेट्रिन, गाबापेंटिन एंड टियागापिन. So गाबा देखने को मिल रहा है, right? I hope it's clear.
एंड के प्लस चैनल जो ओपनिंग हो रही है, देन रेटिगाबिन जो है उसका गाबा पे कोई एक्शन नहीं है. दिस इज द एक्सेप्शन गाइस. Retigabin cannot increase or decrease GABA. It cannot act through GABA. It only acts through increasing the K plus, right? Uh, so guys, why are you sending the buffering logo? I think everything is okay again. Yeah, everything is okay. I think चैट चल रही है, वीडियो भी चल रही है, आई थिंक ऑडियो भी चल ही रही है. I hope it's fine. I think it's fine. Hmm. Uh, yeah, but why are you sending this buffering logo? Anyways, first of all, we have to increase the GABA. So what we have to do is we'll be increasing the GABA, right? We have to increase the GABA mediated chloride channel. So we'll be opening this, right? And we want to. So basically GABA को increase कैसे करेंगे? So we can increase the release of the GABA, we can decrease the metabolism of the GABA, we can decrease the reuptake of the GABA, and we can induce the GABA agonist drugs, right? We can administer the GABA agonist drugs, right? हाँ वही तो, बट दैट्स व्हाई मैंने कंटिन्यू ही कर दिया था, पता नहीं बफरिंग वाला साइन क्यों भेजा है. इट्स Yeah, it's okay. So guys, GABA generate हुआ, GABA synaptical vesicle के अंदर आया, then with the help of exocytosis, we GABA is released. So अब हम क्या कर सकते हैं? We can increase the exocytosis process and we can increase the GABA, right? Secondly, हम क्या कर सकते हैं? तो GABA का मेटाबॉलिज्म हो जाता है. ट्रांसएमिनेसिस इज द एंजाइम दैट बेसिकली मेटाबोलाइज द GABA, राइट? तो हम मेटाबोलाइजेशन ब्लॉक कर सकते हैं. तो क्या होता है कि if 100 molecules of GABA are released, so what is happening here? 80 molecules जो हो रहे हैं वो मेटाबोलाइज हो रहे हैं, 80 molecules वेस्ट हो रहे हैं, इनएक्टिव हो रहे हैं, राइट? 80 molecules inactivate हो रहे हैं. We are having only 20 molecules left, right? We are having only 20 molecules left. I hope it's clear, right? अब हमें क्या करना है? जो हमारा मेटाबोलाइज कर रहे थे, ये जो सिर्फ so the enzyme that is metabolizing the 100 GABA molecules to only the active 20 molecules. So we will be inhibiting these enzyme that is transaminases. So we can decrease the metabolism. Plus guys, कुछ GABA is reuptake हो जाता है कुछ GABA का with the help of GAT1 GAT1, राइट? सो हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि हम जो रीअपटेक हो रहा है उसको ब्लॉक कर सकें. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वी कैन provide the GABA agonist drug. GABA agonist drug जो है we can provide, मतलब हम GABA agonist ड्रग दे सकते हैं. बेसिकली GABA agonist ड्रग will not be GABA, बट वो GABA जैसा स्ट्रक्चर होगा. सो दैट्स व्हाई वो क्लोराइड चैनल्स की वजह से GABA को बढ़ा देगी एंड GABA का एक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, right? So we want to increase the GABA here. So the drugs जो मैंने बताया था, first of all we will be talking about the newer drugs, that is pregabalin and gabapentin. So guys, pregabalin and gabapentin, they increase the GABA, plus they are also having the action by blocking the T type calcium channels, right? T type calcium channels को भी ये block कर देते हैं, right? So drug of choice for neuropathic pains, basically pregabalin and gabapentin, they are a drug of choice for neuropathic pains. They are rapidly, frequently used nowadays for the neuropathic pains, post-hepatic neuralgia and the diabetic neuropathy basically. So they are used for the neuropathic pains and they increases the GABA, right? एंड वीगाबेट्रिन की अगर हम बात करें, सो बेसिकली प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन जो है वो रिलीज करते हैं गाबा को. दे इंक्रीज द रिलीज ऑफ द गाबा, राइट? दे इंक्रीज द रिलीज ऑफ द गाबा.
राइट। एंड विगाबेट्रिन की अगर हम बात करें, सो गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर इज देयर, राइट। सो बेसिकली क्या है, विगाबेट्रिन नाम सजेस्ट करता है गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर, GIGABA transaminase inhibitor. So GABA transaminase inhibitor. So as the name suggests, this is the GABA transaminase inhibitor. So this will be decreasing the metabolism. Metabolism decrease करेगी ये drug, right? I hope it's clear. So GABA transaminase inhibitor है ये, and treatment is infantile spasms. Basically it is used for the infantile spasms. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर IN है, तो it is indicated for the infantile spasms as well, right? But the drug of choice for infantile spasm is adrenocorticohormone, right? Drug of choice for the infantile spasm is adrenocorticohormone. बट गाइज इसका जो साइड इफेक्ट आता है दैट इज विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन। एंड साइड इफेक्ट आप इससे देख सकते हो, वी आई से विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन। एंड आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। तो गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, विगाबेट्रिन इज द ड्रग, वी आई की वजह से वी कैन लर्न इट्स साइड इफेक्ट दैट इज विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन। Then GABA, and it's the GABA transaminase inhibitor, GABA trin, right? And in IN is the indication, and it is indicated in the infantile spasms, right? But the drug of choice for the infantile spasm is adrenocorticohormone, and the drug of choice is infantile spasm plus tuberous sclerosis, right? So basically it is the drug of choice for the infantile spasm with the tuberous sclerosis. So if these two conditions are there, then we have to give vigabatrin, right? Then let's talk about the tiagabin. So guys, tiagabin, as the name suggests here, TA. So right, GAT1 को inhibit करता है, tiagabin inhibit the GAT1, and it inhibits, thus it inhibits the reuptake of the GABA, right? So first of all, pregabalin and gabapentin are the drug. What will be the duration of this session? So I have decided minimum 2 hours, but let's see what should be the duration, because we will be continuing, मतलब हम एक ही सेशन में we have to complete this thing, right? तो मिनिमम डिसाइड करा था 2 hours, बट लेट्स सी, हमने 1 घंटा तो निकल ही चुका है, बट स्टिल सीजर्स आर आल्सो नॉट कंप्लीटेड। लेट्स सी टिल व्हेन we can complete, right? uh, please be with me. Right. So tiagabin is the drug basically that blocks the GAT1 transporter or the reuptake transporter, and it inhibits the reuptake of the GABA, right? And barbiturates की अगर हम बात करें, then the drug is phenobarbital. It also increases the GABA, and it also decreases the glutamate. And phenobarbital it can causes the hyperkinesia in the children. So guys, we have discussed the drugs that can increase the GABA. So first of all, we have studied the pregabalin and gabapentin. So these drugs increases the GABA, and they block the T-type calcium channel as well. The drug of choice for the neuropathic pains, they are basically pregabalin is frequently used for the neuropathic pains, right? Post hepatic neuralgia, diabetes mellitus induced neuropathics, right? And vigabatrin is, as the name suggests, it acts as the GABA transaminase inhibitor, and it is indicated in the infantile spasms. But at the other hand, drug of choice for the infantile spasms is adrenocorticohormones, plus its side effect is visual field contraction, right? And if we talk about the drug of choice for the infantile spasm plus tuberous sclerosis, then we have to give vigabatrin only, right? And tiagabin blocks the GAT1, basically it blocks the reuptake, and thus it inhibits the reuptake of GABA, and it increases the GABA in the terminal, synaptic terminal, and thus GABA की increase हो जाती है। And barbiturates or phenobarbital are the drugs that increases the GABA, plus they decreases the glutamate as well, plus they can cause hyperkinesia in children. That's why they are not used nowadays.
And now let's discuss about the benzodiazepines, guys. So we are having four types of benzodiazepines that are used for the different types of the treatments of the epilepsy. So diazepam is the drug that is used for the febrile seizures. Febrile seizures के लिए we will be using febrile seizures, जो कि most common होते हैं children के अंदर, right? We have to give the diazepam की suppository, rectal instillation is needed, and with the paracetamol suppository, right? Lorazepam is indicated. It is the drug of choice for the status epilepticus IV administration. Clonazepam is the drug of choice for absence seizures, right? Clobazepam is the drug for the Lennox-Gastaut syndrome, right? So we are having the four drugs: diazepam, lorazepam, clonazepam, clobazepam. So diazepam is the drug of choice for the febrile seizure. That is the common thing in the children. Lorazepam is the drug of choice for status epilepticus, and clonazepam is the drug of choice for absence seizures. Clobazepam, Lennox-Gastaut syndrome, is basically clobazepam is used for the Lennox-Gastaut syndrome. I hope it's clear. I hope you can understand this thing. Then, if you want to decrease the glutamate activity, basically glutamate is an excitatory substance. So glutamate को हमें decrease करना है, right? And how we can decrease the glutamate? So there are basically two receptors of the glutamate, NDMA and AMPA receptors. NDMA receptors जो है basically the drugs that acts through NDMA receptors, it is a felbamate, and AMPA receptors को block करने के लिए perampanel is the drug, right? So we are having these two drugs, NDMA blocker and AMPA blocker, felbamate and perampanel, right? So NDMA blocker, felbamate, side effect is bone marrow suppression is there, right? Felbamate का, and AMPA receptors के लिए basically the drug that blocks the AMPA receptor, that is perampanel, and it is used in the focal seizures, right? Partial seizures. आई होप इट्स क्लियर. सो बेंजोडाइजेपिन्स हमने डिस्कस कर लिया, ग्लूटामेट को हमें डिक्रीज करना है उसका भी हमने डिस्कस कर लिया, एनडीएमए रिसेप्टर को ब्लॉक करा, देन फेल्बामेट इज द ड्रग, एम्पा रिसेप्टर को ब्लॉक करा, देन पेराम्पानेल इज द ड्रग, एंड एनडीएमए ब्लॉक करने से बी बोन मैरो सप्रेशन कैन ऑकर, एंड एम्पा रिसेप्टर को ब्लॉक करना इज इंडिकेटेड इन द फोकल सीजर्स. बट प्लस we have also the we are having the drugs that decrease the glutamate, and we are having many drugs like phenobarbital, phenytoin, lamotrigine, topiramate, valproate, levetiracetam, lacosamide, felbamate, perampanel. These are the 9 drugs, man. Guys, these are the 9 drugs that decreases the glutamate, right? These are the 9 drugs that decreases the glutamate, right? I hope it's clear. NDMA blocker जो है felbamate is there, AMPA blocker के लिए perampanel is there, and we are having other drugs as well. So ये वाली ड्रग्स आप कहोगे कि ये तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से करवा रहे हैं, बट ये वाली ड्रग्स हम अभी आगे फर्दर अच्छे से खोल खोल के पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस होती है, क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान्स के अंदर ये यूज होते हैं, राइट? सो ग्लूटामेट एक्टिविटी के लिए phenobarbital, phenytoin, lamotrigine, levetiracetam, these are the drugs that are safer in pregnancy. Valproate जो एक ड्रग है वो हर एक एक्शन से काम करती है, right? And felbamate and perampanel, they are the drugs that only block the glutamate, right? Only. But ये सारी ड्रग्स जो है ऊपर की जो 7 ड्रग्स हैं that are having some other actions as well. Phenobarbital, phenytoin, lamotrigine, topiramate, valproate, levetiracetam, lacosamide, felbamate and perampanel. These are the drugs that are having further actions, but except felbamate and perampanel. Felbamate और perampanel के सिर्फ यही action है, so it can only decrease the glutamate, right? And now it's the time to discuss the calcium channel blocking drugs. So that is the ethosuximide, and it is used for the absence seizures. So अभी तक हमने कहीं absence seizures की बात नहीं करती, but for the absence seizures the drug is used as ethosuximide. The drug is used as ethosuximide. So T-type calcium channel blockers के लिए the drug is used. So the drug is ethosuximide, right? I hope it's clear. And Na plus channel blocking भी हम कर सकते हैं, and the drugs are phenytoin, carbamazepine, oxcarbamazepine, topiramate, zonisamide, lacosamide, rufinide and valproate. So these are the drugs, these are the 8 drugs. So हमने देखो T type calcium channel के अंदर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था that ethosuximide is that drug that is used for the absence seizures, right? And
सोडियम चैनल ब्लॉकिंग के लिए फर्स्ट इज फेनिटोइन, कार्बामेजिपिन, ऑक्स कार्बामेजिपिन, टोपिरामाइड, जोनिसामाइड, लेकोसामाइड, रुफिनामाइड, valproate are the drugs. Fenytoin, carbamazepine, ox carbamazepine are used in the GTCS and focal seizures and contraindicated in absence and myoclonic seizures. Right. I hope it's clear. Phenytoin, carbamazepine, ox carbamazepine, they are indicated for the GTCS focal seizures and the contraindication is absent and myoclonic seizures. Topiramate and zonisamide, they can cause renal stones, right? So MCQs के अंदर guys ऐसा ही आता है. MCQs के अंदर it comes like this only, right? That the drugs that can cause renal stones. So the drugs are topiramate and zonisamide. And lacosamide and rufinamide are the drugs that are used for the focal seizures, partial seizures, right? And valproate is the drug जो कि जिसका हर एक mechanism of action से act करता है except K plus opening, right? Except K plus opening हर action से valproate act करता है and सबसे ज़्यादा potent drug भी valproate ही है, right? I think that it's good. समझ में आ रहा होगा आप सबको. And now let's talk about the newer mechanism, newer anti-epileptic mechanism, newer anti-epileptic mechanism. K plus channel opening. So the drugs are retigabin, ezogabin. So guys, इन दोनों drugs के अंदर GABA GABA लिखा हुआ आ रहा है, but these are exceptions. जैसे कि विगाबेट्रिन, टियागाबिन और प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन के अंदर भी GABA आया था. So वो तो GABA को increase करती हैं by various mechanism. But retigabin or ezogabin, they are having only K plus opening channel. No GABA action is exhibited by these drugs. No GABA action is produced. Nothing. Right? And the treatment or the indication is focal seizures. Right? Right? I hope it's all right. It's okay. But guys, ये इतना ज़्यादा potent नहीं होता. सबसे ज़्यादा potent drug और the most used drug is valproate. तभी अगर एक female है that is epileptic और हम उसको drug valproate दे रहे हैं, valproate की therapy चल रही है and अगर उस female and now she is pregnant and the female is pregnant, so we will not stop this therapy. हम ये therapy carry on करेंगे, हम ये therapy देंगे. We have to give this therapy. हम ये therapy देंगे, right? Even valproate can cause neural tube defects. Even then we have to give because guys, she is already pregnant. तो अगर हमने कोई भी देखो valproate सबसे ज्यादा potent anti epileptic drug है and suit हो रही है फीमेल को, राइट? अगर उस फीमेल को हमने अब थेरेपी चेंज करी एंड वो थेरेपी सीजर थ्रेशोल्ड को इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई एंड इवन विद द स्मॉलर स्टिमुलाइज अगर सीजर्स प्रोड्यूस हो गए देन फीटस को डैमेज प्रोड्यूस हो सकता है एंड फीटस को डैमेज प्रोड्यूस हो गया देन अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा, राइट? सो वैल्प्रोइड हम चलते रहने देंगे बट विद द वैल्प्रोइड वी विल बी गिविंग हाई अमाउंट्स ऑफ फॉलिक एसिड. We will be giving very large amount of folic acid, right? बहुत ही high dose में folic acid देंगे ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो. बेसिकली दिस इज द प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. तो गाइज अगर आप मेरे को शिव विरमानी ऑफिशियल इज माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उस पे मैंने अभी ना एक आई हैव रिव्यूड सम ऑफ द मीम्स. सो दे आर बेसिकली एजुकेशनल मीम्स प्लस दैट वीडियो इज फनी एज वेल. तो जाके देखो एंड उसमें मैंने फार्माकोलॉजी के काफी सारे इजी कॉन्सेप्ट्स के अच्छे मीम्स शो करे हैं, एक्सप्लेन करे हैं, राइट? सो जाओ देखो, शिव विरमानी ऑफिशियल इज द चैनल, राइट? सो नाउ कम्स द ड्रग्स की बात करें. फर्स्ट ऑफ ऑल इज फेनिटोइन. फेनिटोइन इज द ड्रग दैट इज इंडिकेटेड फॉर द GTCS, generalized tonic-clonic seizures and focal seizures. This is the drug, right? So this is the potent drug, right? Plus this is used for the trigeminal neuralgia. Second choice after carbamazepine. So first choice of the drug जो है, first drug of choice for the trigeminal neuralgia is carbamazepine, CB, right?
But second choice is phenytoin. So we can prescribe phenytoin for trigeminal neuralgia as well. So phenytoin is a barbiturate analog, poor sedative property, plus it is tested on that electroshock seizure model. So जो हमने फर्स्ट मॉडल पढ़ा था जो कि GTCS के लिए था, so it abolishes the tonic phase of the maximum electroshock seizures. तो ये टॉनिक फेज को पोटेंटली ब्लॉक कर देता है रोडेंट्स के अंदर, सो दैट्स व्हाई GTCS के अंदर ये पोटेंट है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ये सोडियम को भी ब्लॉक करता है एंड इट डिक्रीजेस द ग्लूटामेट एज वेल. राइट, इट ब्लॉक्स द सोडियम एंड इट डिक्रीजेस द ग्लूटामेट एज वेल. Pharmacokinetics की बात करें, then oral absorption is slow, metabolized by the hydroxylation as well as glucuronide conjugation. CYP2C19, CYP2C9, these are the two microsomal enzymes जिसकी वजह से ये metabolize होता है. And ये याद रखना है, CYP2C9 and CYP2C19, these are the drugs, these are the microsomal enzymes, right? These are the microsomal enzymes and it follows the zero order kinetics. तो हमने जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर अच्छे से डिस्कस करा था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. सो गो एंड वॉच अगर आपको नहीं पता तो. तो पेनिटोइन इज द ड्रग that acts through zero order kinetics. Let's move further. So एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट्स का निमोनिक इज HOTMALIKAN, right? So I will not say, but understand कर लो. H is 4H, right? 4H का मतलब hirsutism, gum hypertrophy, hypersensitivity, fetal Hydantoin syndrome. So this is a teratogenic drug. Phenytoin is the teratogenic drug, and this is the mnemonic, guys. 4HOTMALIKAN. So 4H, hirsutism, gum hypertrophy, hypersensitivity, fetal Hydantoin syndrome. And guys, अब जो further adverse effects हैं, they are as follows: osteomalacia, teratogenicity, megaloblastic anemia, arrhythmia, lymph node enlargement, insulin decrease करती है. So that's why diabetes mellitus के अंदर they should be prescribed with proper देख के देनी चाहिए, right? Or it should be not prescribed in the DM patients, right? Plus it decreases the vitamin K, right? So हमें vitamin K की supplementation साथ में start कर देनी चाहिए. And A से ataxia, nystagmus, vertigo, basically cerebral symptoms जो भी आते हैं. So physiology में भी ये चीज पढ़ते हैं, cerebral symptoms, ataxia, nystagmus, vertigo. So and T से tissue necrosis. Phenytoin is having a high potency of local vascular injury, and because of the intimal damage, it can produce a thrombosis and edema and necrosis finally. So it can cause necrosis. And guys, contraindication की अगर हम बात करें, it is contraindicated in absence and myoclonic seizures, guys. It is indicated for the GTCS and trigeminal neuralgia, but it is absolutely contraindicated in absence and myoclonic seizures. And if we talk about the newer phenytoin, that is false phenytoin. So phenytoin के साथ हमें ये जो टिश्यू नेक्रोसिस वाला सिम्टम्स थे बहुत ही ज्यादा पोटेंट थे, प्रेवेलेंट थे. सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड दैट इसका एक ऐसा डेरिवेटिव डिराइव करते हैं ताकि जो भी फेनिटोइन की वजह से एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं वो उसकी वजह से ना आए, राइट? Phosphenitoin, so water soluble prodrug is there of phenytoin, overcome the difficulties in IV administration. So guys, जो भी IV administration के साथ साथ difficulties थी like necrosis, वो इससे ठीक हो जाती है phosphenitoin से. And it can, but guys इसके साथ एक और drawback है, it cannot be administered with the glucose drip solution or dextrose. Dextrose के साथ नहीं दे सकते because dextrose के साथ it gets precipitated, right? It gets precipitated, right? I hope it's clear. And phenytoin is indicated for the status epilepticus. With the end of this thing, हम status epilepticus का treatment देखेंगे. And let's move further. Carbamazepine is the drug जो कि GCTS, focal seizures and trigeminal neuralgia के लिए use है. Basically, it is the drug of choice for trigeminal neuralgia, and it can also be used for the diabetes insipidus and bipolar disorder. So guys, diabetes, but it can be used. It is not the drug of choice. It is not the drug of choice.
But the drug of choice for the diabetes insipidus is desmopressin. I hope it's clear. So, drug of choice, DI की drug of choice is desmopressin, and drug of choice for BD is lithium, right? Drug of choice for bipolar disorder is lithium, and diabetes insipidus के लिए drug of choice is desmopressin, right? Uh, and it raises the threshold of for the PTZ. PTZ का threshold raise कर देता है, electroshock conversions का भी threshold raise कर देता है. It inhibits the kindling. Kindling का मतलब it inhibits the new, देखो जो new neuronal circuits form हो रहे थे, formation हो रही थी, वो inhibit कर देता है, right? These things are inhibited, right? And mechanism of action is through sodium blocking. राइट. फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें, ओरल एब्जॉर्प्शन इज स्लो, पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी इज देयर, मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, and the microsomal enzymes are CYP3A4, CYP2C9. But earlier हमने देखा था फेनिटोइन का CYP2C9, CYP2C19. These two enzymes were involved in phenytoin, and CYP3A4 and CYP2C9 is involved in carbamazepine, right? And phenytoin का adverse effect was 4H, इसका adverse effect is 4A, right? Carbamazepine का adverse effect is 4A. So aplastic anemia, ADH release from posterior pituitary, SIADH, dilutional hyponatremia due to the increased water content in the body, right? So basically ADH release जो होता है, बेसिकली डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज वाटर कंटेंट इन द बॉडी. एटेक्सिया की वजह से एटेक्सिया वाले सिम्टम्स आते हैं, निस्टैग्मस एंड वर्टिगो, बेसिकली सेम एज फेनिटोइन. ऑटो इंडक्शन इज possible with this. Increased metabolism of other drugs and itself is seen. So basically, it can increase its metabolism and other drugs as well, right? And increase incidence of minor fetal malformation. Minor fetal malformation. I hope it's clear. I hope. Yeah. Oh my God. What's wrong? What's wrong with this? Yeah. So adverse effects phenytoin का था 4H, but carbamazepine का is 4A. Aplastic anemia, ADH release from posterior pituitary. So guys, suddenly phone जो है वो switch off हो चुका है, and I can't help it. I can't go and bring the charger. So please, आपके चैट्स जो है वो मैं बाद में देख के आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा, राइट? आई एम रियली सॉरी गाइज. आईफोन का आपको पता ही है कि चार्जिंग की प्रॉब्लम, बैटरी की प्रॉब्लम होती है. सो अभी मैंने देखा कि लाइव चैट मतलब नहीं देख पाऊंगा मैं, बिकॉज फोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका है. आई एम रियली सॉरी गाइज. पता नहीं क्या हो रहा है आज कल, थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है और थोड़ा सा बिजी सा शेड्यूल हो गया. अर्लियर कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस ली थी हमने, जनरल फार्माकोलॉजी की, एंटीबायोटिक्स की. आई एम रियली सॉरी, बट शाम को 5 PM वाली क्लास में एवरीथिंग वुड बी ओके. मैं भी थोड़ी मेडिकेशन वगैरह ले लूंगा, एंड एंड थोड़ा प्रॉपर से ना कॉफी वॉफी पी के आऊंगा मैं, ब्लैक कॉफी वगैरह, ताकि थोड़ी एनर्जी. एनर्जी तो अभी भी है, एनर्जी तो मजा तो आ रहा है, बट अब आई कांट हेल्प इट विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कि अब फोन स्विच ऑफ हो गया. आई एम स्टिल ऑन, बट फोन स्विच ऑफ हो गया. आई कांट हेल्प इट. सो रियली सॉरी गाइज. सो एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, फेनिटोइन के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट द 4H, एंड कार्बामेज़ेपिन के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट द 4A. aplastic anemia, ADH release, and ataxia and auto induction increase the metabolism of the other drugs and itself increased incidence of the minor fetal malformations. So pregnancy के टाइम या नहीं देनी, right? Phenobarbital, it is the first efficacious anti-epileptic drug, but it was the first, it was the oldest efficacious drug and not used nowadays. Not used, right? जैसे हमने अभी पीछे सेडेटिव हिप्नोटिक्स की क्लास में बात करी थी कि बार्बिचुरेट्स के काफी सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, प्लस वी आर नॉट हैविंग इट्स एंटीडोट एज वेल. सो वी कांट हेल्प इट if the patient is undergoing the toxicity, right? So poisoning के cases के अंदर हमें hemodialysis करना ही पड़ता है at the last option, right? So phenobarbital is
फर्स्ट एफिकेशियस ड्रग फर्स्ट और द ओल्डेस्ट एफिकेशियस ड्रग यही बनी थी। सिडेशन, इट causes sedation as well, जैसे कि हमने अभी बात करी। इट कैन इंक्रीज द गाबा, इट कैन डिक्रीज द ग्लूटामेट, ये हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। Wide spectrum anticonvulsant property, it shows is the wide spectrum anticonvulsant property like valproate, right? Valproate is also a wide spectrum anticonvulsant, and it raises the seizure threshold and it suppresses the kindled seizures, right? It raises the seizure threshold and it suppresses the kindled seizures, right? I hope it's clear. I hope it's clear. Uh, yeah. Side effects are behavior abnormalities, dementia, और इंटेलिजेंस को हैम्पर हो सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, मेंटल कंफ्यूजन। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स दैट आर बेसिकली फेल्ट विद द phenobarbital। सो बेसिकली ज्यादातर तो ना मेमोरी और इंटेलिजेंस वाले ही साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं phenobarbital से। सो डेमेंशिया and intelligence impairment, memory impairment, hyperactivity in the children, mental confusion, behavior abnormalities. These are all the symptoms that are basically followed. I hope uh, it's clear. And guys, fourth की drug की बात करते हैं, ethosuximide, that is calcium channel blocker. Calcium channel blocker and T-type calcium channel blocker, and it is the drug of choice for the absence seizures. Absence seizures के लिए it is indicated for the absence seizures, right? And action is basically it suppresses the PTZ and it raises the seizure threshold. These things are not asked under the MCQs basically, बट गाइस इसको समझना जरूरी है क्योंकि कई बार ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पर MCQs के अंदर एग्जामिनर कैन स्टिल आस्क these things, right? So basically ethosuximide, it cannot modify the maximum electroshock seizures, that's why it cannot be used for the GDCS, generalized tonic clonic seizures के अंदर हमें maximum electroshock seizure को block करना होता है, right? But in this it cannot block it, right? So that's why it is not indicated for the generalized tonic clonic seizures, right? और जो इसके adverse effects हैं that are महेंद्र सिंह धोनी और माही इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, लाइक इट कैन चेंज इट बेसिकली इट कैन कॉज मूड चेंजेस, एजिटेशन, हेडेक, इंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस, इनएबिलिटी टू concentrate. Mood changes, agitation, headache, intestinal intolerance, inability to concentrate. These are all the adverse effects of the ethosuximide. I hope it's clear. सो इथोसक्सिमाइड हमने अभी तक फेनिटोइन कर ली है, कार्बामेजिपिन कर लिया, फिनोबार्बिटॉन कर लिया, इथोसक्सिमाइड कर लिया, राइट? एंड वैल्प्रोइक एसिड, अब आता है वैल्प्रोइड का टाइम। सो दिस इज द मोस्ट efficacious drug, wide spectrum drug, right? This is the drug that can act through the all mechanisms except K plus opening. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या होते हैं? सोडियम चैनल ब्लॉकिंग, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग, ग्लूटामेट ओपनिंग, oh sorry, GABA opening and glutamate blocking, right? So it increases the GABA, decreases the glutamate, blocks the calcium, blocks the sodium, right? And it is indicated as मैंने कहा कि wide spectrum है, so it is indicated for the GCTS, absence seizures, myoclonic seizures, atonic seizures, Lennox-Gastaut syndrome, bipolar disorder, prophylaxis of the migraine, right? GCTS, absence seizures, myoclonic seizures, atonic seizures, Lennox-Gastaut syndrome, bipolar disorder, prophylaxis of migraine. So basically this is a broad spectrum anticonvulsant, and it is more potent in blocking the PTZ than in modifying the maximum electroshock seizures. Chronic, chronic electroshock seizures and kindling are also prevented with this. मतलब ये हर एक experimental models को block कर सकती है, and it can be used for every type of seizures, right? And pharmacokinetics की अगर हम बात करें, then oral absorption is good enough, 90% bound to plasma proteins, metabolized in liver by oxidation, CYP2C19, CYP2C9, same as phenytoin. Phenytoin का भी अगर आपको याद हो, then we have already talked about these things that it microsomal enzymes जो कि phenytoin में
है, दैट इज CYP2C9 एंड CYP2C19 एंड वैल्प्रोइक एसिड का CYP2C9 एंड CYP2C19, right? And it also metabolized by the glucuronide conjugation. Plasma life is 10 to 15 hours, right? और इसका adverse effect is valproate. Valproate का adverse effect is valproate. So for V, there is vomiting and many other GI manifestations, right? Like GI irritation. Plus, guys, इसका जो characteristic side effect है, that is alopecia. Characteristic side effect is alopecia. जैसे कि हम बात करेंगे आगे, टोपीरामेड का कैरेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट इज वेट लॉस। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट है इसका एलोपेशिया, राइट, और कर्लिंग ऑफ हेयर। तो अगर वाइवा में अगर आपको पूछें कि कोई भी ऐसी ड्रग बताओ जिसका साइड इफेक्ट इज एलोपेशिया, देन व्हाट यू हैव टू आंसर इज valproate. और if they ask you the characteristic side effect of valproate, then you will be going to answer alopecia. And if they are asking that characteristic anticonvulsant that can cause weight loss, then you will be answering topiramate, right? So valproate के अंदर vomiting, alopecia, curling of hair, then it can cause hepatotoxicity, then it can cause pancreatitis and PCOD as well, right? And rashes, allergic manifestations, obesity, ataxia, teratogenicity, most teratogenetic anti-epileptic drug, spina bifida and neural tube defects. तो मोस्ट एरोटोजेनिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, बट स्टिल अगर एक पेशेंट, एक फीमेल है, उसकी थेरेपी चल रही है राइट बिफोर प्रेगनेंसी, तो विद इन प्रेगनेंसी हम वैल्प्रोएट ही कैरी ऑन करेंगे, प्लस प्रोफाइलैक्टिकली हम बहुत ही हाई डोजेस ऑफ फॉलिक एसिड देंगे। आई होप इट्स क्लियर, राइट। एंड लैमोट्राइजिन की अगर हम बात करें, सो लैमोट्राइजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इट कैन लैमोट्राइजिन इज बेसिकली सेफ एज ड्रग इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर एपिलेप्सी हुई है, देन क्या कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, देन लैमोट्राइजिन और लेवेटिराजिटाम, दीज टू एल ड्रग्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। बट अगर प्रेगनेंसी से पहले एपिलेप्सी है एंड पेशेंट थेरेपी ले रहा है वैल्प्रोएट की, देन प्रेगनेंसी के बाद भी वैल्प्रोएट ही चलने देनी है। बट अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एपिलेप्सी वाले अटैक्स हुए हैं, देन what you will be prescribing is levetiracetam or lamotrigine, right? Right. एंड लैमोट्राइजिन के अंदर देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज Na blocking, GABA increase and glutamate decrease, right? It increases the GABA and it decreases the glutamate. It is a broad spectrum anti-epileptic drug, modifies maximum electroshock seizures, that why it is used for the GTCS, and does not antagonize PTZ seizures, can be used as an add-on therapy in refractive cases of GTCS. So this can be used as the add-on therapy as well. And pharmacokinetic is basically it is a good oral absorptive and T half life is 24 hours, and side effects are sleeping, dizziness, diplopia, ataxia, vomiting and GI manifestations. Adverse effects की अगर हम बात करें तो स्टीवन जॉनसन syndrome and toxic epidermal necrolysis, SJS Steven Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. सो टोपिरामेट की अगर हम बात करें तो Na प्लस ब्लॉकिंग, ग्लूटामेट डिक्रीज, K प्लस इंक्रीज। सो treatment indication is GCTS, focal seizure, myoclonic seizure, add-on therapy, bipolar disorder, prophylaxis of migraine, alcohol addiction, obesity. These are all the indication of the topiramate. So topiramate का एक specific side effect is weight loss, जिसको हम use कर सकते हैं as a indication in the obesity. So topiramate is used in the obesity, can be used in the obesity. So treatment of topiramate, basically topiramate is indicated for the GTCS, focal seizures, myoclonic seizures, add-on therapy, bipolar disorder, prophylaxis of the migraine, alcohol addiction, obesity, and it is also a weak CA inhibitor as well. Broad spectrum anticonvulsant and inhibitory action is produced on the maximum electroshock seizures, PTZ, and kindling model. So that's why it is a wide spectrum, broad spectrum anticonvulsant. So that's why इसके इतने सारे indications हैं, like valproate, right? और इसका एक बहुत ही ज़्यादा specific indication is obesity. ये चीज़ समझने की बात है, right? साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, देन sedation, ataxia, impairment of attention, weight loss, renal stones, and poor memory.
sedation, ataxia, impairment of attention, weight loss, renal stones, and poor memory. These are all the side effects of the topiramate: sedation, ataxia, impairment of attention, weight loss, renal stones, and poor memory. Right? And lecosamide की बात अगर हम करें तो it is the adult drug. This is the adult drug. That's why यहाँ लिखा हुआ है कि it is only indicated for the 18 plus. It is the add-on therapy on the focal seizures basically. Partial seizures के अंदर it is indicated lecosamide, and it blocks the sodium, and it decreases the glutamate as well. And it is the new drug metabolized by CYP2C19, and adverse effects: ataxia, diplopia, vertigo, and tremor, depression, and cardiac arrhythmia. Right? Ataxia, diplopia, vertigo, tremor, depression, cardiac arrhythmia. These are the drugs. Levetiracetam is a unique drug. Unique drug है ये, right? So adult drug कौन सी है? Lecosamide. Adult drug कौन सी है? Lecosamide. And wait a second. And unique drug कौन सी है? Levetiracetam. Levetiracetam and lamotrigine. These are the true drugs that are used for the pregnancy, that are indicated in the pregnancy, that are indicated in the epilepsy in pregnancy, during pregnancy. So levetiracetam की indications are focal seizures, myoclonic seizures, GTCS, absence seizures, and they are acts as a adjuvant as well. So add-on therapy or monotherapy, and suppresses the kindle seizures but ineffective against the maximum electroshock seizures or PTZ. फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ओरली और पार्शली टी हाफ लाइफ इज 6 to 8 hours, and adverse effects are sleepiness, dizziness, behavioral changes, driving may be impaired, and contraindication is children below 4 hours, right? Levetiracetam is a unique drug, right? And basically, it is also contraindicated in the children below 4 years, and it can cause sleepiness, dizziness, and this is the safe drug in the pregnancy, right? And this can be used as add-on on the monotherapy for the focal seizures and myoclonic seizures and GTCS and absence seizures, and suppresses the kindle seizures but ineffective against the maximum electroshock seizures. That's why uh, जीटीसीएस के अंदर इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ये ड्रग. एंड डायजेपैम की अगर हम बात करें, डायजेपैम इज द ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर द फेब्राइल सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड एक्लेम्पशिया, राइट? एंड फेब्राइल सीजर्स के अंदर रेक्टल इंस्टिलेशन इज जनरली प्रेफर्ड विद द पैरासिटामोल सपोजिटरी, एंड फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द इमरजेंसी कंट्रोल फॉर द कन्वर्जन्स. तो फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ द कन्वर्जन्स इज डायजेपैम. लोराजेपैम नहीं है, वैल्प्रोइट नहीं है, फिनोबार्बिटॉन नहीं है, फॉस्फेनिटॉइन नहीं है, फेनिटॉइन नहीं है, बट डायजेपैम है. अगर एमसीक्यू के अंदर आए देन प्लीज टेक डायजेपैम, राइट? एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन द इंजेक्टेड वेन, fall in the BP, respiratory depression. These three are the most common adverse effects: thrombophlebitis in the injected vein, fall in the BP, respiratory depression. So these are the side effects of the diazepam. Thrombophlebitis in the injected vein, same thing can be caused with the phenytoin as well, बट फेनिटॉइन के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट होता है नेक्रोसिस. फॉल इन बीपी कैन आल्सो अकर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैन आल्सो अकर. लोराजेपैम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टेटस एपिलेप्टिकस. Lorazepam is the drug of choice for the status epilepticus, and 0.1 mg per kg to 2 mg per kg is administered generally IV. एंड क्लोनाजिपैम की अगर हम बात करें तो एब्सेंट सीजर्स के अंदर, मायोक्लोनिक सीजर्स के अंदर, एकाइनेटिक्स, एपिलेप्सी, एक्यूट मेनिया, इन्फेंटाइल स्पैज़म्स, इन दीज ऑल disorders clonazepam is preferred, right? Absent seizures, myoclonic seizures, akinetic epilepsy, acute mania, infantile spasms. Side effect की अगर हम बात करें, sedation, dizziness, ataxia, behavioral changes, irritability. These are the side effects, right? Clonazepam, absence seizure, myoclonic seizure, akinetic epilepsy, acute mania, infantile spasms, and side effects are sedation, dizziness, ataxia, behavioral changes, and irritability. And guys, now comes these new drugs जो कि हमने अब ऊपर डिस्कस कर ही लिया, like gabapentin, tiagabin, pregabalin, vigabatrin, retigabin, azogabin. So we have already discussed these drugs above. So gabapentin increases the GABA, tiagabin increases the GABA by blocking the GAT1,
and vigabatrin by blocking the transaminases. It is basically a transaminase inhibitor. But retigabin and ezogabin, they open the potassium channels, right? These things we have already discussed. And now treatment of the status epilepticus. Status epilepticus का treatment हमने discuss करना है. That is really crucial. So कौन सी conditions पर status epilepticus आप बोलोगे? Basically कौन सी conditions पर आपको ये लगेगा कि patient is under the status epilepticus? So guys, when the seizure activity occurs for more than 30 minutes, so you will be saying status epilepticus. And when there are two or more seizures occurring without any recovery of consciousness, called as status epilepticus. So when there are more than two seizures without any recovery time, तो जनरली क्या होता है गाइस, एक सीजर का अटैक आया 90 सेकेंड्स मान लो, जनरली 30 टू 120 सेकेंड्स का होता है एक सीजर, तो हमने एवरेज ले लिया 90 सेकेंड्स। तो एक 90 सेकेंड्स के अंदर टोनिक और क्लोनिक फेज आई, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 30 से लेकर 160 सेकेंड्स तक 60 सेकेंड्स तक रिकवरी स्टेट होती है, जिसके अंदर ब्रेन मेंटेन करने की कोशिश करता है अपने ब्रेन में इक्विलिब्रियम, राइट, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। बट अगर वो नहीं कर पाता देन अगेन सीजर कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ 90 सेकेंड्स। तो फिर 90 सेकेंड्स का आता है, फिर रिकवरी टाइम आती है। बट जिनको स्टेटस एपिलेप्टिकस आप कैसे देखोगे कि देयर आर कॉन्टिन्यूस 90 सेकेंड के सीजर्स, बट जो रिकवरी टाइम है वो लेस देन 30 सेकेंड्स है, राइट, और रिकवरी टाइम है ही नहीं, कॉन्टिन्यूस सीजर्स हो रहे हैं, तो यू विल बी रेफरिंग इट एज स्टेटस एपिलेप्टिकस, राइट। First of all, you will be maintaining the airway breathing and circulation as the emergency treatment. So this will correct the hypoglycemia and right. Basically, what I am saying. First of all, you have to maintain airway breathing and circulation, right? And secondly, आपको ये चेक करना है कि patient hypoglycemia के अंदर तो नहीं है, right? Hypoglycemia भी चेक करनी है और आपको चेक करना है कि कहीं टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज कई बार जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब भी एपिलेप्सी हो सकती है, और जब कई बार ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा कम होता है तब भी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है और एपिलेप्सी हो सकती है, राइट। First of all, maintain the ABC. After that, correct the hypoglycemia. So how you will be correcting the hypoglycemia? By administering the IV dextrose, right? Then second, the drug of choice is lorazepam. You have to administer 4 mg, rate 2 mg per minute of the lorazepam IV line से. Diazepam 10 mg diazepam, rate 2 mg per minute IV. Fosfenitoin, अगर आपको fosfenitoin is preferred 100 to 150 mg per minute IV infusion से, right? Infusion से slowly. And phenytoin sodium, it is not generally preferred, but if you are not having fosfenitoin, then you have to administer the phenytoin and 25 to 50 mg per minute only, right? ज़्यादा दोगे तो there are high chances of necrosis. Phenobarbital sodium is preferred. It is alternative to the fosfenitoin. So आपने एयर में ब्रीथिंग सर्कुलेशन नॉर्मलाइज कर दिया, हाइपोग्लाइसीमिया नॉर्मलाइज कर दिया, हाइपरथर्मिया नॉर्मलाइज कर दिया, बट फिर भी सीजर सबसाइड नहीं हुए, देन लोराजिपैम दो, लोराजिपैम से नहीं हुए, देन डायजिपैम दो, देन फॉस्फेनिटोइन दो, देन नहीं है तो फेनिटोइन दो, एंड ऑल्टरनेटिव इज फिनोबार्बिटॉन एज वेल। फिनोबार्बिटॉन 50 to 100 mg per minute IV. Refractive cases के अंदर who fail to respond to lorazepam and fosfenitoin treated with the IV midazolam, propofol and thiopenton anesthesia. तो guys, अब फिर क्या होता है अगर वो इन ड्रग से ट्रीट नहीं हो पा रहा, lorazepam is failed, diazepam is also failed, fosfenitoin is failed, phenytoin is failed, phenobarbital is failed, then the patient is refractive. पेशेंट रिफ्रैक्टिव स्टेट में चला जाएगा। अब क्या करेगा पेशेंट फिर? अब हमें क्या करना है? अब हमें एनेस्थेटाइज करना है पेशेंट को। So we'll be administering midazolam, propofol or thiopenton, and we'll be anesthetizing the patient, और पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देंगे ताकि डिप्रेस हो जाए CNS बहुत ही सीवियरली, राइट, और बहुत ही इजीली डिप्रेस हो जाए और सीजर्स ना आए। आई होप इट्स क्लियर, and now comes the treatment of the epilepsy in pregnancy. So guys, if there was वैल्प्रोइट थेरेपी, जैसे मैं बता चुका हूँ प्री प्रेगनेंसी में चल रही थी तो वैल्प्रोइट ही चलने देनी है, बट अगर
प्रेगनेंसी के टाइम ही एपिलेप्सी स्टार्ट हुई है, सीजर अटैक स्टार्ट हुए हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू इज lamotrigine or levetiracetam, they are least teratogenic drugs, right? So what you have to do is you can give lamotrigine and levetiracetam. They are least teratogenic. And seizures during eclampsia. So basically seizure due to high BP. The drug of choice is MgSO4 magnesium sulfate IV. अगर आप क्लिनिक्स में जाते हो तो आपको पता होगा ये चीज, राइट। और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो जनरली प्रेस्क्राइब्ड हैं ड्रग्स फॉर कंट्रोलिंग द कन्वर्जन, अब नॉर्मल जर्किंग अगर हमें कंट्रोल करना है, देन व्हाट विल बी एडमिनिस्ट्रिंग, देन विल बी गिविंग डायजेपम एंड लोराज़ेपम, जर्किंग को कंट्रोल करना है। But if you want to suppress the seizure or decrease the electrical firing, then what will be giving valproate, lamotrigine and levetiracetam. Epilepsy in children अगर है तो children अंदर है तो I am sorry, for the epilepsy in children we will be prescribing lamotrigine. For the elders levetiracetam, GTCS के अंदर valproate and focal seizures के अंदर carbamazepine. Focal seizures evolving into GTCS is valproate, right? I hope it's clear. Focal seizures, carbamazepine focal seizures evolving into GTCS, valproate is prescribed, and ultimately valproate is the drug, potent drug, wide spectrum drug that is prescribed. And guys, now comes the Parkinsonism. So epilepsy is completed. Now comes the Parkinsonism. So Parkinsonian basically symptoms जो produce होते हैं. First of all क्या होता है, fascinant gait आ जाता है, Parkinsonian gait और fascinant gait is basically felt by the patient. Hypokinesia is felt, slowed movement, reduced arm swinging is seen, rigidity is seen, freezing is seen, postural instability is seen. So the patient constantly finds the center of gravity by attaining the fascinant gait. Fascinant gait पर constantly वो center of gravity ढूंढेगा, but वो fumble करेगा, but fall नहीं करेगा. Fumbling करेगा, he will be afraid that he might fall. Shuffling steps होंगे. Asymmetric resting tremors will also felt and mask like phase over, right? So guys, Parkinsonism कैसे होता है? Parkinsonism डोपामिन की डेफिशिएंसी से होता है, आप लोगों को ये पता है। बट गाइस, पार्किंसोनिज्म कैसे हो सकता है? तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है ब्रेन के अंदर, डोपामिन का एंड एसिटाइलकोलिन का। सो गाइस, अगर डोपामिन डिक्रीज हो जाए, देखो, इफ देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ डोपामाइन एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीएच, अगर यहाँ पर 80 हो जाएगा ना, तो पार्किंसोनिज्म वाले सिम्टम्स आने लग जाएंगे। इफ देयर वुड बी 80 मॉलिक्यूल्स ऑफ डोपामाइन एंड 100 ऑफ एसिटाइलकोलिन, सो देयर कैन बी सिम्टम्स। प्लस गाइस, अगर ये 100 है प्लस एसिटाइलकोलिन 120 हो गया, सो दैट्स व्हाई दैट्स आल्सो द अनदर कॉज कि सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट? आई होप इट्स क्लियर। डोपामिन और एसिटाइलकोलिन इन दोनों को इक्विलिब्रियम में रहना है। अगर डोपामिन डिक्रीज हो गया, देन इक्विलिब्रियम इज इम्बैलेंस्ड, राइट? और एसिटाइलकोलिन अगर इंक्रीज हो गया, तो इक्विलिब्रियम इज इम्बैलेंस्ड। आई होप इट्स क्लियर। आफ्टर दैट पार्किंसोनिज्म की बात करें तो इट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर, हाइपोकाइनेसिया, स्लोइंग ऑफ मूवमेंट, fascinant gait. Patient certainly finds the center of gravity but फेल हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मिलती, दैट्स व्हाई फंबल करता है बट फॉल नहीं होता। सो ही फील्स दैट ही माइट फॉल, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मास्क लाइक फेस हो जाता है, साइलोरिया, डिमेंशिया। These are all the symptoms of the Parkinsonism. So guys, Parkinsonism कैसे होता है? Generally deficiency of dopamine की वजह से होता है। Deposition of the Lewy bodies basically in the substantia nigra, and Lewy bodies का दूसरा नाम is alpha synuclein bodies. So deposition of the Lewy bodies or alpha synuclein bodies in the substantia nigra. And causes क्या हो सकते हैं guys? Primary cause is aging basically. So guys, पहले ये माना जाता था, पहले ये माना जाता था before the 20th edition of Harrison, बिफोर द 20th एडिशन ऑफ हैरिसन, ये माना जाता था कि देयर इज नो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ पार्किंसोनिज्म, बट आफ्टर द 20th एडिशन ऑफ हैरिसन, अब क्या माना जाता है कि देयर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ पार्किंसोनिज्म। सो गाइस, जिन जिनको पार्किंसोनिज्म होता है ड्यूरिंग 40 to 45 एज, उनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। सो देयर इज अ genetic defect, that is chromosome 1 park gene defect. So guys, there is defect in the chromosome 1 and there is a chromosome 1 per, there is defect in park 1 gene, right?
सेकेंड की बात करें, देन ड्रग इंड्यूसेस एंटी साइकोटिक्स, देन देयर इज बेसिकली, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एजिंग, सो हम क्या करते हैं, हम डोपामिन को इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंडली क्या होता है, ड्रग इंड्यूस कॉज भी हो सकता है। ड्रग इंड्यूस कॉज कैसे हो सकता है, इफ वी गिव एंटी साइकोटिक ड्रग्स, देन एंटी साइकोटिक ड्रग्स ब्लॉक्स द डोपामिन, सो दैट्स व्हाई एसिटाइलकोलिन इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है एंड दस सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स कैन कॉज पार्किंसोनिज्म एंड व्हाइल एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स कैन कॉज साइकोसिस। I hope it's clear. So important thing is antipsychotic drugs can cause Parkinsonism while anti-Parkinsonian drugs can cause psychosis. Right? तो गाइस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डोपामिन कैसे रिलीज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता हो तो देयर इज टायरोसिन, एंड टायरोसिन कम्स अंडर द टर्मिनल synaptic terminal, then it converts to the dope, and then dopa converts to the dopamine comes into the synaptic vesicle. So vesicle से exocytosis होकर dopamine is released. Then dopamine acts from the receptors, right, in the brain and peripheral. But at the same time, dopamine is metabolized with the help of monoamine oxidase and COMT enzymes, right? तो गाइस रिसेप्टर्स ब्रेन में तो एक्ट करेगा, सो अगर रिसेप्टर जो है ब्रेन में है और डोपामिन इज हैपनिंग ऑन द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सीएनएस टिश्यू, then it will increase the, then it will subside the Parkinsonian symptoms, right? पार्किंसोनियन सिम्टम्स जो है वो सबसाइड हो जाएंगे, राइट। एंड पेरिफेरल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो देखो, यह समझने वाली बात है कि देयर इज पेरिफेरल D2 receptors, basically peripheral dopamine receptors and central dopamine receptors. सेंट्रल पे अगर एक्ट करो डोपामिन, देन क्या इफेक्ट होगा, देन पार्किंसोनियम सिम्टम्स जो है वो सबसाइड हो जाएंगे, राइट। बट गाइज एट द सेम टाइम अगर पेरिफेरल डोपामिन एक्ट हुआ, पेरिफेरली डोपामिन एक्ट हुआ, देन व्हाट विल be the symptoms. So guys, अगर peripheral dopamine act हुआ, so if there is large amount of dopamine present in the bloodstream, तो वो peripherally act करेगा, peripheral act करेगा तो वो act करेगा D1 पर, beta 1 पर, alpha 1 पर और CTZ पर। D1 पर act करेगा तो hypotension cause करेगा, B1 पर act, beta 1 पर act करेगा तो एरिथमिया कॉज करेगा, अल्फा 1 पर एक्ट करेगा तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा, CTZ पर एक्ट करेगा तो वॉमिटिंग कॉज करेगा। एंड गाइज मेरे को मजा नहीं आ रहा, एक बार ना मैं फोन ऑन कर ही लेता हूँ, लेट मी ब्रिंग द चार्जर, सो प्लीज डोंट माइंड गाइज, मैं एक सेकंड के अंदर आया, एक सेकंड के अंदर। Wait guys, I'm really sorry. Yeah, it's fine. Oh, yeah. I'm really sorry, guys. Please don't mind. Please don't mind, guys. Please don't mind. बट जब तक चैट नहीं दिखती ना तब तक मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है कि मैं कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ, बट चैट होती है ना तो इट फील्स ग्रेट, इट फील्स गुड। आपके भी अगर कुछ एरर्स है जो भी है, मुझे लगा था 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, बट क्लास इज रियली लॉन्ग गाइस, सो प्लीज bear with me. I'm really sorry guys, but what can I do? CNS इतना ज़्यादा complicated भी है और इसकी क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी थी, that's why. So guys, मैंने अभी तक बताया कि if there are central receptors then Parkinson symptoms will subside, but if the dopamine is acting on the peripheral receptors then what will happen? तो D1, beta 1, alpha 1 और CTZ यहाँ पर एक्शन शो होगा, and hypotension, arrhythmia, hypertension and vomiting. It can cause hypotension, basically postural hypotension. It can cause arrhythmia like condition, it can cause hypertension, and it can cause nausea and vomiting as well. And guys, in it basically to increase the dopamine, what we can do is we can increase the dopa synthesis, right? We can increase the dopamine synthesis or dopa synthesis, and we can increase the dopamine release. The second
is we can increase the dopamine release guys. So exocytosis अगर हम बढ़ा सकते हैं तो stimulus बढ़ा सकते हैं तो and we can decrease the metabolism. Basically we can inhibit the MAO and COMT, the enzymes that are present that are basically metabolizes the dopamine, right? I don't know why the phone is not rebooting. Reboot ho ja. It will take some time guys. And fourth, dopaminergic agonists. So dopaminergic agonists are also present. So finally, phone is rebooting. And till then, हम आगे चलते हैं. So guys, for increasing the dopamine, what we are having is we can. So guys, हम dopamine ना directly नहीं दे सकते. Because वो peripherally act करेगा और peripherally produce करेगा actions like postural hypotension, arrhythmia, hypertension, alpha 1 को stimulation की वजह से and it can also cause nausea and vomiting, right? Yeah, guys, phone is finally on. Wait a second, wait a second, guys. Let me just see. Wait a second, wait. I'm really sorry, I'm really sorry. Yeah, so finally YouTube start हो गया है and हाँ, uh, yes, yes. So finally अब मैं आपकी चैट देख सकता हूँ and क्या क्या चैट आई है let me read the things first. uh, nothing much कोई एरर नहीं आया है अभी तक. Yeah, yes. Yeah. So guys, uh yes, thank you so much. Thank you so much. Yes. Yeah, so let's move further. Please continue. Yeah. I am continuing. मैं पुरानी चैट्स पढ़ रहा था कि कहीं किसी को क्वेरी तो नहीं हो. सो गाइस वी कैन देखो हमने डोपामिन ना हमने डायरेक्टली दिया पेशेंट को. सो हम क्या करते हैं हम डोपामिन देते हैं. डोपामिन दिया सो फिर क्या हुआ डोपामिन देने से पेरिफेरल सिम्टम्स आए लाइक पोस्टरल हाइपोटेंशन, पेशेंट फेल एरिथमिया, पेशेंट का बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गई एंड नोजिया, वॉमिटिंग एंड ऑल ऑफ दैट सिम्टम्स. फिर हमने सोचा कि डोपामिन और पार्किंसंस में ना कोई भी सिम्टम्स में कोई भी एलिवेशन नहीं आया था, राइट? सो वी डिसाइडेड कि कोई ऐसी ड्रग देनी चाहिए जो कि पेरिफेरल सिम्टम्स पे एक्ट ना करे, ब्रेन पे जाए, राइट? सीएनएस के अंदर जाए. सो वी डिसाइड लीवोडोपा. लीवोडोपा इज द प्रो ड्रग, राइट? ये प्रो ड्रग है, पेरिफेरली एक्ट नहीं करती, एंड ये ब्रेन में जाके बेसिकली एक्ट करती है. बट गाइज अगेन हमने देखा कि यार इसके भी सिम्टम्स सेम आ रहे हैं बट कम आ रहे हैं, बट सेम तो आ रहे हैं. पेरिफेरल हाइपोटेंशन फील हो रही है, हाइपरटेंशन, एरिथमिया एंड ऑल ऑफ दैट, नोजिया एंड वॉमिटिंग लाइक थिंग्स, ये सब कुछ हो रहा है. और फिर जब हमने आगे टेस्ट करा तो दैट वाज बिकॉज ऑफ द डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम. सो गाइस लीवोडोपा जब हमने प्रो ड्रग है सो ये it is basically converted to the dopamine with the help of decarboxylase enzyme. And guys levodopa peripherally दी तो decarboxylase enzymes की वजह से it converts to the dopamine, right? तो पेरिफेरली एक्शन फिर से प्रोड्यूस हो रहा था और सीएनएस में सिर्फ 20% ही जा रही थी, राइट? एंड डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो गाइस फिर हमने सोचा कि लीवोडोपा को भी हम कैसे दें ताकि ये सब सिम्टम्स ना आए, राइट? हमारी 100% ड्रग सीएनएस के अंदर जाए, 100% ड्रग एक्शन शो करे. सो वी डिसाइड द डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स. तो गाइस क्या होता था, लीवोडोपा हमने दी, डी कार्बोक्सिलेज ने इसको कन्वर्ट करके डोपामिन कन्वर्ट कर दिया पेरिफेरली, और ये फर्दर जाके अल्फा 1, बीटा 1, डी 1 एंड सीटीजेड पे एक्ट कर दिया.
एंड ये सब चीजों पे एक्ट करेगा तो फिर साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, नॉट वैल्यूएबल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, कोई भी पार्किंसोनिज्म में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, राइट? So guys, then we decided that we can provide peripheral decarboxylase inhibitors, ताकि हम ये वाला स्टेप को है वो ब्लॉक कर दें, ताकि ये वाला जो पेरिफेरली डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा था वो ना हो, एंड वी डिसाइड अ कार्बिडोपा ड्रग and benzaldehyde is the second drug, right? So carbidopa is generally prescribed with the levodopa. Carbidopa is not a DA precursor, not the prodrug of the dopamine. It is peripheral decarboxylase inhibitor. So guys, ये वाला step block कर देता है. Levodopa, most of the levodopa crosses the CNS tissue. Most of the levodopa crosses the CNS tissue, and thus CNS tissue को cross कर it produces the desired effects, right? Dopaminergic agonists की अगर हम बात करें तो that is bromocriptine and ropinirole. These are the drugs that is basically used, right? And most effective जो थेरेपी होती है वो लेवोडोपा एंड कार्बिडोपा की होती है, most effective therapy. And then we are having the MAOB inhibitor जो uh, MAOB inhibitor, monoamine oxidase B inhibitor, seleginil and rosaginil. These are the basically the drugs that inhibits the metabolizing enzyme, right? Seleginil and rosaginil, and COMT inhibitor entacapone or tolacapone. These are the two drugs that are COMT inhibitors. And then we are having an antiviral drug also as well that can basically increase the dopamine. So glutamate agonist is the drug DA facilitator, amantadine anti-influenza 8-2, right? Right. So DA precursor levodopa, carbidopa, peripheral decarboxylase, carbidopa, benzaldehyde, dopaminergic agonist, bromocriptine, ropinirole, MAOB inhibitor, seleginil, resaginil, COMT inhibitor, entacapone, tolacapone, and glutamate agonist is amantadine, anti-influenza A2, NDMA. Right. So these are the various drugs that increases the dopamine. Right. I hope these are clear. Now let's go further. Pramipexole. Yeah, pramipexole. हाँ, pramipexole इसके अंदर नहीं लिखा, but pramipexole is also the drug. Basically, pramipexole अभी हम आगे पढ़ेंगे. It is there. So ropinirole के साथ ही there is a pramipexole. Pramipexole is generally the drug of choice. This is the drug that is preferred. Wait a second. Let us just continue with the DA precursor, जो कि levodopa है. That is a prodrug. So guys, specific celebratory effect in the Parkinson's disease. Basically, it provides the specific effects. Very less efficacious है ये because 95% metabolize हो जाता है peripherally by the help of the dopa decarboxylase, and dopa decarboxylase की वजह से peripheral symptoms आते हैं postural hypotension, arrhythmia, HTN and vomiting. And basically देखो CTZ is not bound by the blood brain barrier. That's why CTZ is outside the blood brain barrier, right? Blood brain barrier के outside है ये. So that's why the thing is CTZ is stimulated. Actions जो होते हैं CNS के produce होते हैं, symptomatic improvement occurs, behavioral changes occur, general alerting response is there, frank psychosis is there, increased sexual activity is also seen. Then it can produce a awakening response in hepatic coma, right? Hepatic coma के अंदर भी levodopa is produces the awakening response, right? Pharmacokinetics की बात करें तो rapidly absorbed in the intestine, gastric emptying is slow, levodopa is less available in brain, amino acid compete with the absorption, high first pass metabolism is there. तो गाइस जैसे कि हमने बात करी कि लीवोडोपा इज लेस अवेलेबल फॉर द ब्रेन, सो और इसके ड्रग इंटरैक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज ये चीज अच्छे से याद कर लेना. तो पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6 जो है इट एनहांसेस द पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन. तो अगर आपने विटामिन के साथ
लेवोडोपा ले ली, तो आपको पेरिफेरल सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाएंगे, बिकॉज डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा एंड all of the levodopa will be converted to the dopa peripherally in the peripheral tissue only, एंड दस CNS पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा एंड आपको सिम्टम्स सारे के सारे साइड इफेक्ट सिम्टम्स ही प्रोड्यूस होंगे, राइट? So it enhances the peripheral decarboxylation, so reach less to the brain, no desired effects. Non-selective MAO inhibitor levo plus levodopa, बेसिकली अगर लीवोडोपा को एमओ इनहिबिटर के साथ देंगे तो हाइपरटेंशन क्राइसिस हो सकता है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सीवियर स्टिमुलेशन हो सकता है अल्फा 1 का। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ देंगे तो पोस्टरल हाइपोटेंशन फील हो सकता है, राइट? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ इफ वी वांट टू गिव लीवोडोपा देन व्हाट विल हैपन, पोस्टरल हाइपोटेंशन। To prevent the peripheral decarboxylation, levodopa should be administered with the dopa decarboxylase inhibitors or the carbidopa. To prevent the peripheral decarboxylation, levodopa should be administered with the dopa decarboxylase inhibitor, that is the carbidopa. This is the most effective treatment. Most effective treatment बोल रहा हूँ मैं, mind my words. Peripheral decarboxylase inhibitors की अगर हम बात करें तो we are having carbidopa and benzerazide. Extracerebral decarboxylase inhibitors are ये है, तो administered with levodopa they increase the T half in the periphery, so that more of the dopamine can penetrate through this, right. And benefits है, systemic conversion of the DA is reduced, no activation of alpha, beta, CTZ, D1, so no effects like HT and vomiting, hypotension, arrhythmia, and there are reduced on and off effects, right? So there are reduced on and off effects, right? I think it's good, right? It's fine, right? Uh, Carbidopa and benzerazide, these are the peripheral decarboxylase inhibitors, and they are generally benefited when they are administered with the levodopa. अगर हम इसको सिर्फ देंगे then कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा. Alone carbidopa is nothing, but it can increase the efficacy of the levodopa, because more of the levodopa will be entered into the brain and brain में effect show होगा. प्लस गाइज रिड्यूस्ड ऑन एंड ऑफ इफेक्ट इज आल्सो सीन, सो ऑन एंड ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होता है गाइज? सो ये ग्राफ है, इसको समझो। तो गाइज क्या यहाँ पर ये चीज समझाई जा रही है इस ग्राफ से? तो इफ देयर इज इफ यू हैव एडमिनिस्टर्ड द ड्रग, सो कुछ टाइम बाद वो ब्लड में उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, so you will be feeling or the patient will be feeling beneficial effect, but guys फिर डोपामिन बहुत ही ज्यादा सीवियरली इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स व्हाई साइकोसिस वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी इन दिस थिंग। तो फिर क्या होगा? मेटाबोलाइजेशन स्टार्ट होगा ड्रग का, मेटाबोलाइजेशन के बाद साइकोसिस वाली कंडीशन कम होगी एंड अगेन गुड अमाउंट ऑफ डोपामिन वुड बी देयर, एंड इसकी वजह से अच्छा फील होगा पेशेंट को, राइट? पार्किंसन सिम्टम्स विल सबसाइड, एंड फिर क्या होगा? फिर अगेन आफ्टर प्रोलॉन्ग मेटाबोलाइजेशन ये ड्रग नेगेटिवली खत्म हो जाएगी, बेसिकली मेटाबोलाइज हो जाएगी, उसकी वजह से नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, मींस पार्किंसन सिम्टम्स आएंगे, एग्रीवेट होंगे सिम्टम्स, एग्रीवेट होंगे, फिर पेशेंट ड्रग लेगा, ड्रग के बाद सिम्टम्स बेनिफिशियल होंगे, सबसाइड होंगे, देन अगेन पेशेंट विल फील गुड, देन साइकोसिस वाले सिम्टम्स होंगे ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोपामिन। सो गाइस दिस इज द ऑन एंड ऑफ इफेक्ट। सो ये फ्रीक्वेंटली कई बार पेशेंट्स को फील होता है, फ्रीक्वेंटली फील होता है ऑन एंड ऑफ इफेक्ट, राइट? फ्रीक्वेंटली, राइट? And let's move further. Third is dopamine agonist, bromocriptine, ropinirole. And we are having pramipexole also. So pramipexole is or ropinirole, these two drugs that are preferred because देखो bromocriptine is a ergot derivative, right? Bromocriptine is ergot derivative. Potent D2 agonist है, partial agonist antagonist D1 receptor. Say side effect is vomiting, hallucination, hypotension, nasal stuffiness, conjunctival injection is given as well. Plus marked fall in BP, first dose effect. Patient who are antihypertensive medication, so first dose effect produce होगा marked fall in BP. Then there is high chances of gangrene and fibrosis. Plus ergot derivatives are highly efficacious in migraine as well. माइग्रेन के अंदर दे आर हाईली एफिकेशियस,
Yeah, you're saying right. uh, if dopamine deficiency is there, then there would be NA deficiency as noradrenaline synthesized from dopamine. Yeah, yeah, you are right. Carbapenem. Yeah. तो गाइस देखो अभी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं. सो प्रोपिनिनोल एंड प्रामिप्लेक्सोल आर द effective drug non-ergot derivative selective D2 and D3 agonist safe as drug and long acting and better tolerated. And now MAOB inhibitor seleginil and rosaginil. Seleginil is selective and irreversible MAOB inhibitor. Higher doses produce hypertension with levodopa. And adverse effects are postural hypotension, nausea, confusion with levodopa. Psychosis can be also produced. And rosaginil is 5 times more potent, so that's why psychosis इसके अंदर severe produce होगा. And COMT inhibitor, entagamol and tolacapone, they can cause liver toxicity used as adjuvant to levodopa. Basically, what are you asking? I cannot understand. Prabhakar, please repeat your question और इसको थोड़ा अच्छे से समझाओ. COMT plays role in the degradation of dopamine in the brain. COMT inhibitor preserve the dopamine formed in the striatum and supplement the peripheral effect, increase the on time, decrease the off time duration, and decrease the wearing off. Right. Adverse effects, it worsens the levodopa adverse effects. Nausea, vomiting, postural hypotension, and hallucination are all the adverse effects of this, right. Then glutamate NDMA antagonist की अगर हम बात करें, DA facilitator की बात करें, तो amantadine is the drug. Amantadine anti-influenza virus, right. Amantadine is the drug that is used for the anti-influenza virus. This is the antiviral drug, and इसका जो characteristic side effect है, that is levodo reticularis, that is pink pigmentation of the skin in the form of meshwork, right. Pink pigmentation of the skin in the form of meshwork, right. So basically it acts by increasing the release of dopamine from the vesicle. It promotes the presynaptic formation of the dopamine. And the side effects are insomnia, restlessness, confusion, nightmares, hallucination, ankle edema. These are the all the side effects, right. Plus levodo reticularis, this is the characteristic side effect, right. And now let's talk about the uh, central anticholinergics जो कि यूज होती हैं. Basically this is the drug of choice for the drug induced parkinsonism. Drug induced parkinsonism के अंदर we will be using central anticholinergics, right. Central anticholinergics act by reducing the unbalanced cholinergic activity in the striatum and parkinsonism patient, basically, right. So tremor is benefited more than rigidity here. So tremor is benefited, basically acetylcholine जो है decrease हो जाएगा. And side effect impairment of the memory and cognition, confusion, blurred vision, urinary incontinence, urinary retention is seen. Central anticholinergics are benzhexol, benztropine, procyclidine. These are the drugs, right? There that are the central anticholinergics. Trihexyphenidyl. Right? Some antihistaminic drug have also significant central anticholinergic property. First generation antihistaminic can cross the blood-brain barrier, right? So first generation antihistaminic भी use हो सकते हैं like promethazine. This can also be used, right? This can also be used because first generation antihistaminic can cross the blood-brain barrier as well, right? So हमने क्या बात करी? We can also decrease the ACH. देखो अगर 100 molecules dopamine थे, 100 molecules acetylcholine थे, but now there are only 80 dopamine. So हम क्या करेंगे? हम anticholinergics देंगे और acetylcholine के भी हम 80 कर देंगे. It's that simple, right? And drug of choice for Parkinsonism is basically pramipexole and ropinirole. This is the drug of choice for Parkinsonism. And most effective drug in Parkinsonism is levodopa and carbidopa, जैसे मैं पहले बोल रहा था. Drug of choice for drug-induced Parkinsonism is benzhexol or central anticholinergics. Right? Right. I hope it's fine. And now we have completed the epilepsies. Epilepsy we have completed, and we have also completed the epilepsy, we have completed the Parkinsonism, but still we are having many topics till now. So we'll be ending this class by 3. I think that we can end this class by 3.
3 आवर का सेशन होगा आई होप, है ना? 3 o'clock और 3:30 तक वी विल एंड दिस सेशन। 3:30 तक भी हो सकता है और 3 तक आई विल वाइंड अप द सेशन बाय 3। सो गाइस, मेंटल इलनेस की बात हम करें तो मेंटल इलनेस बेसिकली देयर आर ऑफ टू टाइप्स, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, राइट? In psychosis, reality is lost. Patient does not know who is he, why is he doing. Basically, he know who is he, but he doesn't know why is he doing the things. Reality is lost. Life में reality is lost, right? Neurosis के अंदर reality is not lost. So first of all, psychosis के अंदर there is schizophrenia and there are mood disorders like mania, depression, manic depressive psychosis and bipolar disorder, right? सो गाइज इसके अंदर देखो, समझने की कोशिश करो। साइकोसिस के अंदर रियलिटी इज नॉट लॉस्ट। सो गाइज मेनिया क्या पेशेंट एजिटेशन शो कर रहा है, इरिटेशन शो कर रहा है, ही कैन ऑल्सो डैमेज द हॉस्पिटल इक्विपमेंट एज वेल। सो उसको पता नहीं है कि वाई इज ही डूइंग दिस, वाई ही इज डूइंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? उसको पता नहीं है। अगर उसको पता होगा देन वो नहीं करेगा, तो रियलिटी इज लॉस्ट। प्लस डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो पेशेंट अगर डिप्रेस्ड है वो नेगेटिव बात करेगा विदाउट इवन नोइंग द रियलिटी, राइट? एंड उसको अपनी रियलिटी नहीं पता होगी कि बेसिकली इस टाइप ऑफ चीजों के अंदर काउंसलिंग कैन नॉट हेल्प, राइट? बिकॉज रियलिटी लॉस्ट हो चुकी है। पेशेंट को अपना पॉजिटिव और अपना नेगेटिव नहीं पता। पेशेंट को पॉजिटिव नहीं पता होता और पेशेंट को उसका नेगेटिव नहीं पता होता। दैट्स वाई काउंसलिंग इन चीजों में हेल्प नहीं कर सकती। बट न्यूरोसिस के अंदर फर्स्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज काउंसलिंग ओनली, राइट? रियलिटी इज नॉट लॉस्ट इन दिस। सो पेशेंट को पता होता है कि उसके लिए पॉजिटिव क्या है, क्या उसके लिए नेगेटिव है। सो दैट्स व्हाई दीज आर द डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी, फोबिक स्टेट्स, ओसीडीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, रिएक्टिव डिप्रेशन, बुलिमिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके अंदर रियलिटी इज नॉट लॉस्ट। बट गाइस, न्यूरोसिस को अगर हमने ढंग से ट्रीट नहीं करा देन इट कैन सेकेंडरीली कॉज दीज things like psychosis like conditions, right? So basically in now we'll be discussing the schizophrenia or basically the psychosis. So psychosis is a condition in which dopamine is increased. अभी हमने पार्किंसोनिज्म की बात करी थी। पार्किंसोनिज्म इज अ कंडीशन जिसके अंदर डोपामिन इज डिक्रीज बट हियर डोपामिन इज इंक्रीज्ड, राइट? ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर देयर, राइट? सो दे आर टिपिकल और एटिपिकल। जो टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स हैं, दे एक्ट बाय uh, inhibiting the dopamine or D2 receptor, right? So these are drugs having salutary therapeutic effect in the psychosis. So typical antipsychotics, they block the D2 receptor potently. Plus atypical जो है, they are weak D2 receptor blockers, right? They are weak D2 receptor blockers, right? Plus potent 5-HT2 antagonist, right? Potent 5-HT2 antagonist, right? Schizophrenia, they increase the dopamine. Basically, schizophrenia is a condition where the dopamine is increased. Treatment is antipsychotic drugs are there, typical and atypical. Typical antipsychotic drugs consists of the D2 receptor blocking, strong, weak and intermediate, but plus कोई और एक्शन नहीं होता, राइट? उसके बाद एटिपिकल के अंदर पोटेंट 5-HT2 एंटागोनिस्ट, वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन लाइक क्लोजापिन, ओलैंजापिन, क्यूटापिन, एसेनापिन, जोटेपिन, रिस्पेरिडोन, पैलिपेरिडोन, इलोपेरिडोन, रिप्साडिन, रिप्साडिन। Why I am fumbling, guys? Actually, my throat is paining. Riprasidon and lurasidon, right? So typical haloperidol, trifluperidol, flufenazine, chlorpromazine, thioridazine, thiothixine, chlorprotixine, clozapine, olanzapine, quetiapine, asenapine, zotapine, risperidone, paliperidone, iloperidone, riprasidone, and lurasidone. So these are the drugs. These are the typical and atypical drugs. So typical drugs जो है that blocks the dopamine receptors potently, right? Typical antipsychotic drugs, they block the receptors potently, D2 receptors potently. Action की अगर हम बात करें तो CNS non psychotic, positive to the thought, psychomotor slowing, emotional quietening, reduction in initiative, extrapyramidal motor side effects can be seen.
and extrapyramidal motor side effects are nothing but Parkinsonism like conditions, right? तो अगर हम एंटीसाइकोटिक्स लेंगे तो क्या होगा, डोपामिन कम हो जाएगा और पार्किंसन वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर हम पार्किंसन के अंदर पार्किंसन एंटी पार्किंसोनियन ड्रग लेंगे तो डोपामिन बढ़ जाएगा एंड साइकोसिस हो सकता है। तो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स कैन कॉज साइकोसिस एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स कैन कॉज पार्किंसोनिज्म, राइट। तो सीएनएस के अंदर नॉन साइकोटिक इफेक्ट्स आर बेसिकली पॉजिटिव टू द थॉट, साइकोमोटर स्लोइंग, इमोशनल क्वाइटनिंग, रिडक्शन इन इनिशिएटिव and extrapyramidal motor side effects are produced generally and neuroleptic syndrome, right? And basically slowing it will be producing the slowing things, right? Slow कर देगा वो। तो एंटीसाइकोटिक के अंदर it reduces the irrational behavior, aggression, agitation, hyperactivity, hallucination and delusion। तो जो भी साइकोसिस के अंदर है that patient would be having irrational behavior, aggression, agitation, hyperactivity, hallucination and delusions। But the drugs अगर हम देंगे then it reduces the irrational behavior, aggression, agitation, hyperactivity, hallucination and delusion, right? अगर हम significant chlorpromazine की बात करें, so it can reduce the seizure threshold and thus it can induce the seizures, it can precipitate the seizures। तो guys I am planning कि ना 3 बजे तक जितना भी हो जाएगा 3 बजे के बाद बंद कर देंगे, राइट, राइट। 3 बजे तक हम वी विल एंड दिस सेशन टिल 3। तो अगर 3 बजे तक हमारा खत्म नहीं हुआ टिल 3 p.m. if we fail to complete the full session, then what we'll be doing, then we will be having the second sum up class, right, tomorrow। So guys, significant for the chlorpromazine, it decreases the seizure threshold and thus it can precipitate the seizures. Loss of temperature regulation, block the D2, block CTZ and it is antiemetic as well। Potent local anesthetic effect is also produced, plus it increases the prolactin release। तो गाइस ये चीज आपको ध्यान देनी है, जहां पर भी डोपामिन